यदि आप देखते हैं तो एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि आपकी बहू सुरक्षित है कि नहीं, बेटी सुरक्षित है कि नहीं। ये 4 घटनाएं तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो कि हत्या कर दी गई, दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। लेकिन जो एक बड़ा ट्रेंड डेवलप हुआ है और पूरे देश को जानने वाला सवाल है सर, कि आदिवासी लड़कियों के साथ मुसलमान शादी कर रहा है और शादी करके उनके जो बच्चे हो रहे हैं वो मुसलमान हो रहे हैं। जब झारखंड अलग हुआ तो उस वक्त पाकुड़ एक जिला है हमारे यहाँ जिसका पॉपुलेशन 30% 32% मुस्लिम पॉपुलेशन था। आज वो 66% पर हो गया है। मैं जब गोड्डा में पहली बार चुनाव लड़ने के लिए गया 2009 में अध्यक्ष महोदय, तो उस वक्त जो है केवल और केवल 2 लाख मुसलमान थे। आज 4 लाख मुसलमान। क्या ये यहाँ के मुसलमानों का रोजगार नहीं छीन रहे? क्या एएसआई और पीएफआई की जो एक्टिविटी है इस देश को तोड़ नहीं रही है? पूरे दुनिया का जो भी साइबर क्राइम हो रहा है वो सब मेरे इलाके में हो रहा है। यदि आप देखेंगे जामताड़ा नाम का नेटफ्लिक्स पर एक बड़ा सीरियल हो चुका है और वो सब बांग्लादेशी मुसलमान और घुसपैठिए कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि ये समय आ गया है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाइए, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उसको बाहर करिए और जो आदिवासियों के नाम पर जो प्रताड़ित हो रही हैं महिलाएं, जो शादी करके धर्मांतरण कर रहे हैं और जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन किया है, उसको आप रोकने का प्रयास करें। धन्यवाद। सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ध्यान एक बहुत ही संवेदनशील और दुर्भाग्यपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। गत 30 अगस्त 2002 से सभापति महोदय, हमारे नौसेना के 8 जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं उनको कतर में दोहा में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है और उनके खिलाफ क्या आरोप है, ना उनको वो आरोप बताए गए हैं, ना उनके परिवारों को वो आरोप बताए गए हैं। और 90 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखने के बाद जब उनको 1 दिसंबर 2002 को एक अदालत के सामने पेश किया गया, उनकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की अवधि फिर 30 दिन के लिए बढ़ा दी गई। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं, विदेश मंत्री भी अभी आएंगे अपने बिल को सदन के पटल पर रखने के लिए, कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। हमने 4 दिसंबर 2002 को नेवी डे मनाया है और ऐसी परिस्थिति में एक पड़ोसी देश में हमारे 8 सेवानिवृत्त नौसेना के अधिकारी अगर 120 दिन से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हो और ना उनको बताया गया, ना उनके परिवारों को बताया गया और शायद भारतीय दूतावास को भी नहीं बताया गया कि उनके खिलाफ क्या आरोप है, ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि कतर की सरकार के साथ इस मामले को तुरंत उठाया जाए और ये जो 8 लोग हैं इनको रिहा कराकर हिंदुस्तान वापस लाया जाए। बहुत बहुत जायसवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। बिहार में संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। बिहार में जो भी स्कूल हैं उसमें बिल्कुल साफ नियम है कि जो सरकारी स्कूल है वह रविवार को बंद होंगे और जो उर्दू स्कूल है वह शुक्रवार को बंद होंगे। और इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन पूरे सीमांचल क्षेत्र में चाहे वो किशनगंज हो, पूर्णिया हो, अररिया हो, सभी जगहों पर शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है। जो भारत सरकार अपना मध्याह्न भोजन शुक्रवार को देती है वह बढ़ता नहीं है, वह पूरा का पूरा पैसे का घोटाला हो रहा है। और संविधान से ऊपर व्यक्ति कैसे हो सकता है? जब मेरे क्षेत्र में मझरिया में एक उर्दू स्कूल है, एक भी अल्पसंख्यक बच्चा वहां नहीं पढ़ता है, फिर भी जबरदस्ती शुक्रवार को वहां छुट्टी कराई जाती है, यह कहते हुए कि यह उर्दू स्कूल है, जबकि वहां एक भी अल्पसंख्यक बच्चा नहीं है। वही सीमांचल के क्षेत्र में एक पूरी साजिश के तहत जो एक पूरे इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण शुक्रवार को स्कूल में छुट्टी कराई जा रही है, उस दिन का मध्याह्न भोजन का घोटाला हो रहा है और बिहार सरकार पूरी तरह से चुप है। अभी पीरपैंती में भी श्रीमती नीलम देवी जी की जघन्य हत्या और वह पुलिस अधीक्षक कहता है कि नहीं, यह मामला उधार ले
it can also create a problem, and here they arrest the person or they seize the pirate ship. So we are giving the power to the authority. Either he can arrest the ship or seize the private ship. So if he only sees the private ship and he is not arresting the person, so this power is given, we are empowering the authority, either arrest the ship or seize the vessel, seize the private ship. So arresting the person is not mandatory. He can only seize the private ship and property on the board and finish his job, because he can say very well that I am acting in accordance with the provision of the law. And again, the word suspicion is not there. It has not been treated as punishment. So once we are not treating it as a punishment under the definition of the piracy, then it may create some problem. And about the authorized persons, there is no problem. And again, about the presumption, because Mr. Manish Tiwari ji has referred about the presumption. In some of the law, presumption, on the basis of the presumption, person can be prosecuted. But no doubt it depends upon country to country. But once the offense is extraditable, then it can be on the basis of the reciprocity. We can bring the accused here and prosecute. But the presumption of committing the crime, unless contrary is proved, we have under the bill, we have given the sufficient safeguards. The safeguard is, but because these are the mandatory safeguards, that the recovery of arms and ammunition. Once we recover the arms and ammunition, then presumption can be drawn. In absence of arms and ammunition, no presumption can be drawn. But so therefore, the sufficient safeguards have been provided under the bill that once the arms and ammunition have been recovered, or those are used or intended to be used, the evidence of force and threat is there. The evidence of intended threat is there. So in the bill, the sufficient safeguard have been taken with respect to the presumption. No doubt the presumption is that presumption of the guilt. So some of the enactment we have in this Prevention of Corruption Act like that, that is a valid enactment. So in this, when we are dealing with high C, so in case we don't draw the presumption, then it is very difficult to prosecute that person, very difficult to collect evidence. But in the bill, the mandatory conditions have been provided and sufficient safeguard have been given, and very fine balance have been maintained, that unless there is no recovery. Simply on the basis of this provision, we can't say that only the presumption is there. But for the presumption, to draw the presumption, then the recovery of the arms and ammunition should be there. And those should be either used or intended to use or force, or there is a threat, then only the presumption can be drawn. So therefore, there are sufficient safeguards in the bill. And on the point of the extraditable crime, because it is no doubt and deemed to be any other state on the reciprocity, if there is a reciprocity with the other nations, then we can extradite without any problem. But keeping in view, because every state must have their own legislation. But once we enter into this agreement is there, bilateral treaty is there, then there will be no problem for extraditable the crime. Basically, we have treated this crime as an extraditable crime. So on the basis of the reciprocity, there we can bring him back. Thank you very much, sir. And I support that the bill may be passed. Steve, Mehta. Yes. Sorry. I had requested. For flight. As I have Sorry. And especially speaking after two legal luminaries, it is always a difficult part on my case, because I have, though I am been elected to frame law, I have not studied law, nor any degree I have got from the law colleges or university. And second point which I would like to mention after hearing two colleagues of mine, piracy has not been there in the IPC. You yourself know, sir. The Indian Penal Code is just another version of Irish Penal Code.
CRPC, of course, was framed in 1948, then subsequently number of amendments on. The greatest pirate of this world were Britishers. Why would they frame a law to apprehend pirates? And that is the basic reason, and we have woken up after such a long time that we need to have a piracy law, and Prime Minister raised it in the United Nations. So coming to this bill, I'm really astonished by my predecessor, P.P. Chaudhary, my friend. Perhaps he was also heading that standing committee which went through this bill. And now his number of amendments have been accepted by the government, and still certain amendments have not been. But anyway, he must have gone through in detail, unlike Manish Tiwari, who is very much aware about it. There are certain apprehensions and also certain suggestions which I would like to make in a very brief manner. I would say Indian Penal Code provisions pertaining to armed robbery have been involved in the past to prosecute pirates apprehended by the Navy and the Coast Guard. But in the absence of a specific law on the offense of maritime piracy in India, problems were being faced to ensure effective prosecutions of pirates. This is the basic reason for which this law has been framed. I would say under this bill, if a person while committing an act of piracy causes or attempts to cause death, he will be punished with death or imprisonment. That amendment has come. Supreme Court has in Dalbir Singh versus State of Punjab and Mithu versus State of Punjab in 1983, this was in 2006, earlier on, ruled that mandatory death penalty for an offense violates Article 14 and 21 of the Constitution. The court has held that a provision that imposes a mandatory death penalty is arbitrary and unfair. The Supreme Court has in Vachan Singh versus State of Punjab also narrowed the application of death penalty to the rarest of rare. He is having only 3 minutes, but however, just warning. Sir, this bill defines piracy, and here certain actions may fall on different offenses and have differing penalties. And there are 3 or 4 in that line. And I would just mention it briefly. Any illegal act of violence, detention, or destructions committed against a ship, aircraft, person, or property, inciting or intentionally facilitating such illegal acts, or voluntarily participating in the operation of a pirate ship, any person who commits an act of piracy will be punished with imprisonment for life, death penalty, if the act of piracy causes or attempts to cause death. However, another clause in the bill provides for imprisonment of up to 14 years, along with a fine, if a person aids, assists, participates, organizes, or directs another person to participate in an act of piracy. Offenses in both the clauses seem to be similar. It is unclear which penalties will apply under which circumstances. For instance, person A directs person B to damage a ship on the high seas. There could be 2 ways in which person A is charged: committing an act of piracy by inciting such act and thus be charged with life imprisonment or death, or directing another person to participate in an act of piracy and punished with imprisonment of up to 14 years, along with a fine. Sir, the next point which I would like to mention is the geographical applicability of the bill. And the minister very rightly mentioned about exclusive economic zone. But India has limited rights.
in the exclusive economic zone, such as the rights to explore, exploit, and manage natural resources. Currently, certain acts of piracy, such as acts of violence against ship and seizure of a ship occurring in the EEZ, are covered under the Suppression of Unlawful Acts Against Safety of Maritime Navigation and Fixed Platforms on Continental Shelf Act, that is SUA Act 2002. However, the SU Act 2002 does not cover all acts of piracy as defined under UNCLOS. For example, an act of theft that does not endanger the safety of a ship in the EEZ will not be covered under the SUA Act 2002, but this would qualify as an act of piracy under UNCLOS and this bill. Sir, I would not go into the other aspects, but on international law, UNCLOS, the United Nations Convention on the Law of the Sea, is the first comprehensive enforceable international environmental law covering all forms of marine pollution, land-based, atmospheric, shipborne, and originating from activities on the seabed. UNCLOS of 1982 entered into force on November 16, 1994. Although many nations have signed and notified UNCLOS, their number has not been sufficient to bring it into force. Despite the fact that UNCLOS runs 320 articles and 9 annexes, there are still important issues that require further work. For example, controversies exist over overlapping jurisdiction of territorial waters, that is 12 nautical miles, and exclusive economic zone, that is 200 nautical miles. Therefore, my suggestion is the government must review the provision of death penalty for pirates involved in killing or attempt to murder cases in the proposed piracy bill, as the extradition of the accused may be difficult, which my friend Manish just now mentioned. The law must provide for legal immunity for acts done in good faith. My previous speaker just now mentioned, if arms is seized, but arms for what? Ship may be carrying arms for their own safety, so that security personnel duly authorized by the government to deal with the problem get protection. International cooperation on the issue of maritime piracy at various international platforms should also be brought. All necessary steps should be taken by the concerned ministerial authorities. Sir, the bill, of course, is a landmark move to combat the issue of piracy at sea. However, the proposed law must be reviewed based on international laws. The provision of death penalty, as I have stated earlier, and I had moved an amendment last session, and but I would say must be reconsidered to ensure better acceptance of the proposed law. With these words, I conclude, sir. Sumadi. Thank you very much, Chairperson, sir, for having given me this opportunity to speak on this anti-maritime piracy bill. At the outset, I would like to associate myself with the Honorable Member of the Parliament, Dr. Manish Tiwari, to change the nomenclature as Maritime Anti-Piracy Bill. Sir, my story starts at sea, a perilous voyage to an unknown land, a shipwreck. The wild waters soar and heave, the brave vessel is dashed all to pieces, and all the helpless souls within her drowned. Thus, Shakespeare describes the natural calamities and dangers of a sea voyage. But apart from these, the pirates of the sea are the most dangerous threat, who seize, destroy any ship at high seas, and sometimes even at the harbors at shore. Also, they are involved in many other illegal activities like smuggling and slave trades. So the sea piracy mafia needs to be dealt with iron fist. And so I really appreciate our government's initiative to bell the cat legally through this bill. So according to the International Maritime Bureau of the ICC,
piracy attacks on ships were increased by 20% between 2019 and 2020. India is the largest stakeholder in maritime trade, having our crew and officers constitute nearby 10% of the global seafaring community. And thus it's high time to have this bill passed. And we have our union minister here right now for the external affairs, Dr. S. Jaishankar, who has labored much to bring this bill to see the light of the day. I appreciate wholeheartedly his efforts and hope this will bring sea changes in the Indian maritime history. Sir, the Union is bringing the law as part of the commitment made by India while signing the United Nations Conventions on the Law of the Sea, UNCLOS, in 1982, and the UNCLOS was ratified by India in 1995. I welcome this bill, but would like to draw the attention of this august House through you to some major incidents. Sir, the introduction of this bill comes after some days after 18 Indians aboard a crude oil ship carrier were kidnapped off the coast of Nigeria. Some time ago also, the House would not have been forgotten. An incident had been reported about our fellow Carolite fishermen being killed by the authorities in an Italian naval ship. And since there was a lacuna in the legal system, much had been deliberated and spoken about, and even when we were waiting for the offenders to be punished, they were just let go, which was a very sad thing. And I like to bring those things, incidents, to the attention of this august House, because that's how this bill seems to be very, very important. So, to have a separate domestic legislature on piracy, as well taking care of the fellow fishermen from all the states of India is also very, very important. Yes, yes. That's the point I would like to make here. So far, we have to rely on the Indian Penal Code relating to the offense of wartime piracy in India, and the penal codes are only applicable up to territorial waters. Also, the international naval presence in the Gulf of Aden made the pirate to have a paradigm shift to east and southwards. So, everybody's eyes are now up to the southern part. I appreciate the initiative to pass this bill after so much mulling over on discussions from 2019 onwards, as have been pointed out by my esteemed colleagues. However, during the 15th Lok Sabha, a redrafted bill was presented and it was lapsed. So why I am just pointing out the detailed efforts is, while so much effort have been taken by the union government, showing keen interest and evident interest to safeguard Indians, our trade and other seafaring activities, sheer neglect has been shown to our Tamilian fishermen throughout. Aren't we the sons of Bharat Mata, as you proudly say? So whenever there is a Tamilian fisherman being attacked by the Sri Lankan Navy, the headlines will scream that Indian fishermen are attacked. Whereas in Gujarat, I won't budge in. Whereas Tamilian fishermen are attacked, the headlines will scream, Tamilian fishermen are attacked. I beg your pardon. But wherein Gujarati fishermen are attacked, then the headlines will say Indian fishermen are attacked. Why this stepmotherly treatment to us? Our Chief Minister, Thalapathy M.K. Stalin, has umpteen number of times raised this issue, and our floor leader, respected member of the parliament, Sir Tia Balu sir, also has raised this issue in the parliament. But recently, how many incidents have been, listed? See, 600 fishermen have been killed in the recent times, and thousands of their fishing vessels seized and damaged, more than 600 in the last 30 years. But the government is not taking any stringent laws through legal actions, rather than negotiations and table conferences and diplomatic talks. Also, sir, another important thing is, I would like to bring to your kind notices regarding the Kachativu. Sir, Kachativu was ceded to Sri Lanka in violation under the 1974
1976 agreement, but without the approval of the two houses of parliament. Diplomatic efforts are of no avail considering the fishermen and other issues. India should step into action to reclaim and bring it under our sovereignty. If necessary, the International Court of Justice may also be approached. So, no doubt, I welcome this wonderful, important piece of legislation whereby the union government is empowered to notify designated courts for the trials of piracy and also to increase the scope of maritime navigation beyond the territorial waters to cover economic EEZ. So I have a request here to the union minister, kindly set up one or more courts of sessions in southern parts, especially in Tamil Nadu. That is our kind request, especially in Tamil Nadu should be set up. Sir, as has been pointed out by the members of my respected colleagues here, the punishment of a death penalty is not at all advisable. And as had been rightly pointed out by the union minister here also, we hope that it would be abolished because we have had this history of Justice V.R. Krishna Iyer, the pioneer of judicial activism, who is a strong advocacy against the capital punishment, and our CM is also, all of us are against it, and our own Mahatma Gandhi, we have him, who has said that I cannot in all conscience agree anyone being brought to gallows. Even countries like USA, Italy, who have been part of this, which have been refrained, they have refrained themselves from this capital punishment. Sir, I have a few suggestions also apart from this. The standing committee has stated the role, the one particular point, that the role of the state government has to be clearly defined in order to emphasize and promote effective coordination mechanism. So kindly take that also into account. And again, sir, one more point. There is no mention of international cooperation for the repression of piracy in this bill, which should be addressed. And since our Prime Minister has proudly announced as the head of the G20 summit that one earth, one family, one future, I'd like to request our Honorable Union Minister through you, sir, that he has to consider our fishermen from Tamil Nadu also, because local issues are very, very important and it needs to be addressed. We are very happy. We welcome this bill, but still they have to take into account the plight of our fishermen. Hence, with all these suggestions and requests, I'd like to ask the Honorable Union Minister through you to take into consideration of the above points as well before passing the bill. Thank you very much. Very good. Sri Redappa. Sri Redappa. Sir, I would like to thank the Honorable Chairperson for giving me the opportunity to speak on the Anti-Maritime Piracy Bill 2019. Sir, at the outset, I would like to bring out the importance of Indian Ocean. Sir, the sea lanes in the Indian Ocean are considered among the most strategically important in the world. More than 80% of the world's seamen trade is oil transit through the Indian Ocean points, with 40% passing over through the Strait Hormuz, 30% through the Strait Malacca, and 8% through the Bab el-Mandeb Strait. Further, roughly 55% of known oil reserves and 40% of gas reserves in the Indian Ocean region, sir. The increased significance of Indian Ocean region in the world geopolitics is one of the reasons behind the Pivot Asia policy, which former United States President Barack Obama had considered. The route between Asia and Europe and the east coast of Africa is used by 2,000 ships each month. The piracy in the Indian Ocean is not a recent phenomenon. According to the IBM Piracy Reporting Center, the total number of attacks in the Indian Ocean region that could be attributed in Somali pirates speaks in 2011, and when 237 incidents were incurred and
soared 557 during the 5-year period between 2010 and 14. This number fell dramatically just 14 in the 6 years period between 2015 and 20, a drop that is widely regarded as a result of giant effort to reduce the crime at sea, sir. I would like to point out a few positives in the possible bill, sir. The applicability of this bill is exclusive exam economic zone. Sir, the Indian Penal Code is not valid for foreigners in international waters. Previously, pirates were prosecuted under the Indian Penal Code in 1860. However, Indian sovereignty is delimited by the outer boundary of its territorial waters, that is 12 nautical miles from the coast. Acts of piracy committed by a foreigner outside the Indian's territorial waters cannot be offense under the IPC, and those accused piracy cases have been acquitted due to the lack of jurisdiction. However, the said legislation, if once implemented, will extend the scope of our jurisdiction to exclusive economic zone that is beyond 200 nautical miles from the Indian coastline, sir. The bill is necessary for economic development, sir. Sir, India's economic development is crucially dependent on the sea because of the critically the seaborne trade in the increasingly interlinked world, as well as because the potential of the vast economic resources of the ocean, sir. Indian maritime interests involved in safeguarding of our coastline and island territories, as also our interest in our EEZ, as well as in maintaining open, secure sea lanes in communication, sir. The third point is human risks, sir. The last year, 18 Indians abroad and crude oil carrier were kidnapped off the coast of Nigeria. Therefore, the risk attacked the lives of innocent Indians sailing in this region due to piracy incidents needs to be curbed at the earliest, sir. Finally, Speaker, sir, India can become Vishwaguru with the implementation of this bill, sir. High seas are not under anyone's control. Most priorities that used to be captured till now used to be kept in a jail in Kenya administered by the United States. Thus, since right now no other country in the world has such laws in place, therefore, implementation of such law will make India lead to the other nations in the collective fight against maritime piracy, sir. Hence, for all these reasons, I express our party's support for the bill. Thank you very much, sir. Thank you. Vinayak Raut, Mr. Vinayak Raut. धन्यवाद सभापति महोदय। एक समुद्री व्यापार और व्यवसाय के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनती थी समुद्री डकैती, उसके ऊपर सही इलाज निकालने के लिए और परमानेंट उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालने के लिए इस बिल के माध्यम से एक सही कानून बनाने का प्रयास माननीय मंत्री महोदय जी ने किया है। इसके लिए मैं उनको सबसे पहले धन्यवाद देता हूं। और सभापति महोदय, इस विषय के ऊपर बोलने के लिए मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं। समुद्री डकैती उच्च समुद्रों पर व्यापार और वाणिज्य के लिए प्रमुख खतरों में से एक है। हिंद महासागर विश्व के तेल उत्पादन और वैश्विक समुद्री व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन समुद्री लुटेरों, तस्करों और आतंकवादियों के कारण हिंद महासागर अत्यधिक असुरक्षित और अस्थिर है। यह पाया गया है कि समुद्री लुटेरों के हमले में दक्षिण पूर्व एशियाई देश सबसे अधिक प्रभावित बन चुके थे। यह अदन की खाड़ी में बढ़ी हुई नौसैनिक उपस्थिति के परिणाम स्वरूप है, जिसने समुद्री डकैती के
संचालन को पूर्व और दक्षिण की ओर स्थानांतरित कर दिया और भारत के पश्चिम तट से उनकी निकटता बढ़ा दी है। खास करके सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि 3 दिसंबर 2019 को एक कच्चे तेल वाहक पर सवार कई भारतीय, करीबन 18 भारतीयों को नाइजीरिया के तट से अगवा कर दिया और बातचीत के बाद कई दिनों के बाद उनको रिहा कर दिया, लेकिन नाइजीरिया के तट के पास समुद्री डकों के द्वारा अगवा करने की अन्य कई भी घटना इसके पहले भी हुई थी। 2020 में भी दशकों से भारत को समुद्री डकैती के अपराध से संबंधित किसी विशिष्ट कानून के अभाव में ऐसी कई घटनाओं को सामना करना पड़ रहा था और इसीलिए 1995 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया और यह बिल उसी प्रतिबद्धता का एक परिणाम है। एंटी मैरिटाइम पायरेसी बिल 2019 जो समुद्री डकैती से संबंधित अपराधियों के लिए व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और हमारे जहाजों और चालक दल को सदस्य की सुरक्षा सहित भारत के समुद्री व्यापार को सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरराज्यीय समुद्री डकैती विरोधी कानून बना रहे, ऐसा मैं खुद मानता हूं। पहले समुद्री लुटेरे पर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी एक्ट के ऊपर 1860 के तहत सशस्त्र डकैती से निपटने के लिए प्रावधानों और विशिष्ट अदालतों के नौवहन अधिकार क्षेत्र के तहत मुकदमा चलाया जाता था। इसलिए भारत के जल क्षेत्र के बाहर किसी विदेशी द्वारा कई चोरी का कार्य आईपीसी के तहत अपराध नहीं माना जाता था सभापति महोदय, और इससे ऐसे अपराध निपटने के लिए यह बिल सही तरीके से एक महत्वपूर्ण बिल होगा और यह बिल सरकार को भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीमा से सटे समुद्र के सभी हिस्सों के लिए एक प्रावधान करने का अधिकार इस बिल के माध्यम से मिल रहा है। सभापति महोदय, बिल केंद्र सरकार को संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से प्रभावित कानून के तहत समुद्री डकैती के अपराधों के त्वरित परीक्षण के लिए कुछ अदालतों को नामित न्यायालयों के रूप में से निर्दिष्ट करने में सक्षम करेगा। लेकिन साथ साथ में मैं और एक भी विनंती करूंगा मंत्री महोदय से, जैसे कि पूर्व सांसद महोदय ने किया कि एक वेस्ट कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट है, ऐसे क्षेत्र में भी न्यायालय का निर्माण होने की आवश्यकता है ताकि हमारे फिशरमैन को भी इस समुद्री डकैती जो है उससे कई समस्या को सामना करना पड़ता है। तो इस बिल में अधिकार क्षेत्र की सीमा, गिरफ्तारी और जब्ती, सजा और दंड मानवाधिकार पहलू के बारे में मुकदमे के लिए नामित अदालतों और प्रत्यर्पण के प्रावधान आदि के बारे में भी कई बातें स्पष्ट की है और उसमें वक्त में संशोधन करने की आवश्यकता भी रहेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि नया प्रस्तावित कानून निश्चित रूप से अधिकारियों को पकड़े गए समुद्री लुटेरों पर मुकदमा चलाने में सक्षम बनाएगा, चाहे उनकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो, और यह सदन इसे अधिनियम बनाने में मदद करेगा। समुद्री डकैती पर समर्पित अंतरराज्य कानून के कार्यान्वयन से भारतीय नौसेना या तटरक्षक को राष्ट्रीयता का परवाह के बिना पकड़े गए समुद्री लुटेरे पर मुकदमा चलाने में जरूर मदद मिलेगी और इससे भारत को समुद्री डकैती से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा बनाने में मदद होगी। साथ साथ में मंत्री महोदय से भी ये भी मैं एक विनंती करना चाहता हूं कि राज्य यानी अंतरदेशीय जो फिशरमैन है अपने अपने देश के अन्य राज्यों में, इसमें भी कई जगह पे समुद्रवार चलता है मंत्री महोदय जी। अभी जैसे कि साउथ के कई स्टेट के फिशरमैन महाराष्ट्र में आते हैं, गुजरात के महाराष्ट्र में आते हैं, महाराष्ट्र के अन्य कई जिले में जाते हैं, कई
फिशिंग करते करते वक्त श्रीलंका में जाते हैं, तो ऐसे फिशरमैन को भी सही मदद करने के लिए या उनमें कुछ झगड़ा नहीं होने के लिए भी आप सही वक्त पे उसमें कानून बनाकर उनको भी मार्गदर्शन करेंगे, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूं। और सभापति महोदय, इस बिल का मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद। Thank you. Sri Kalyan Banerjee. Sir, I convey my thanks for giving me chance to speak on this bill. Sir, the Anti-Maritime Piracy Bill 2019 proposes Indian authorities to take action against piracy in the high seas. The bill brings into law the UN Convention on the Law of the Sea, while applies to the sea beyond the exclusive economic zone, that is beyond 200 nautical miles from India's coastline. India signed the United States Nations Convention on Law of the Sea on 10 December 1982 and ratified it on 29 June 1995. Piracy is an ancient phenomenon and its history dates to hundreds of years. It was only in the 20th century that the codification of piracy-related customary laws and practices began. Sir, the marine environment after the 1972 United Nations Stockholm Conference on the Human Environment and the conclusion of significant specific convention, the London Dumping Convention of 1972 and the MARPOL Convention of 1973 became broadly accepted objective. According to the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, piracy is defined as an illegal act of violence or detention or any act of depredation committed for private ends by the crew or the passengers of a private ship. Sir, in accordance with the UN CLOS, the bill defines piracy as an illegal act of violence, detention, or destruction committed against a ship, aircraft, person, or property for private purposes by the crew or the passengers of private ship or aircraft. Sir, piracy there are different characteristics of piracies are there. I am not going there. Sir, I just come to very important part that apart from the International Maritime Organization as addressing maritime piracy for some time, sir, the Jeddah Amendment to the DGBT Code of Conduct 2017, DCOC, expanded to include human trafficking and other illegal maritime activities in the Western Indian Ocean and the Gulf of Aden area. There are so many activities are there in that. I am not going into details. During the period 2009 to 2019, over 500 Indians were captured by pirates around the world at various points of time. The United Nations Security Council, in a number of resolutions adopted since 2008, urged the UN member states to cooperate in investigation and prosecution of all persons responsible for acts of piracy, and further called upon states to criminalize piracy under their domestic law and to favorably consider the prosecution of suspected and imprisonment of convicted pirates. Now the question is that we can draw a line or can fence on a solid land, which is impossible to make a barrier or line on a liquid or on sea. Hence, the system of state baseless is not applied by a state in such a manner as to cut off the territorial sea of another state from the high seas or an exclusive economic zone. Sir, I am giving one information, that's through my speech. The creeks along the coast in Gujarat and Sundarbans in West Bengal are the most preferred routes for smuggling and infiltrations. The security in EEZ is also very important, for which state police has no role to play. It is therefore important that imperative and corrective measures are implemented to address the inadequacies to realize the potential of maritime sector. ASG SCAG in its report has said that manpower shortage proved to be the major hindrance in functioning of marine police stations to vigilance of long coastline. The surveillance must be strengthened on international border
on high seas maritime border and also special training to coastal police for posting in coastal police station. That's the problem is this training in the coastal police training, that's a very inadequate in our country, in every state where the sea coastal line is there. That there, I will request the Honorable Minister to give stress on that, to see that these maritime police who are posted there, they should be well trained. Unless they are well trained, it cannot be detected, it cannot be captured. This is one of the arena which I have found, according to me, it's still we are weak in that. Now, sir, regarding punishment for piracy, the details procedure has been stated. I am not on that. I am on. See, the Supreme Court of India has also ruled that awarding a mandatory death penalty for an offense violates the Article 14 and 21 of the Indian Constitution. And hence it is arbitrary and unfair in nature. Even the Section 303 of the Indian Penal Code and Section 27, subsection 3 of the Arms Act 1959, which provided mandatory death penalty for offenders, has been struck down by the Supreme Court. Kindly take note of this and consider this part. Now, what I am suggesting, instead of death penalty, whether life for imprisonment. Imprisonment means here, you know, now the interpretation, there's a change in by the Supreme Court. Till the death, life imprisonment, instead of mandatory imposition of the death penalty. Kindly consider that part. This is a in England, the penalty for the offense of the piracy was a death penalty, but that has since been abolished. The penalty is now life imprisonment. That has been done. And India is also, our Supreme Court is also saying mandatory death penalty is a offending Article 14 and Article 21 of the Constitution. Mainly it is an offending Article 21 of the Constitution. Therefore, kindly just substitute this word with imprisonment for life if such person committing the act of piracy causes death or such endanger one's life on safety of a ship or an aircraft or any other means of public transport. Sir, so far my reading is concerned, so far I have made it, since I am a member of the Home Consultative Committee also, and occasions arose and where I got the scope to speak also. I will request 2-3 arenas that have to be given an emphasis, although we are supporting accepting that death penalty what I have stated, and this is all are because of the adaptations of the various conventions I have already said in my speech. Now, the first is this, what I have observed that even the state, this coastal police, there are coastal police limited. There, in every state, the training is essentially required. Essentially required. Do not compare them with the just local police, other police. This has to be given an emphasis, and you introduce that centrally. That training has to be taken, how it has to be taken, etc. That has to be given. Secondly, in the border area, where the state arena is over 8, possibly 8 NM. After the 8 NM, immediately in a national level, either your border security or whatever it may be, that you have to take care about that, because immediately after 8, the national level police, whoever is in charge, they have to take the responsibility of that. This is the arena. Arena is really remain no one's arena, and all that smugglers and all that things are being done in that arena. Kindly take care about this, and I have already said about the death penalty. With this, sir, of course, this bill was more earlier. It was required. We are doing it. Support. Thank you, Sri Alok Kumar Suman. धन्यवाद सभापति महोदय, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने द एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2019 पर बोलने का मौका दिया। महोदय, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत के पास समुद्री डाकुओं की पायरेसी के लिए कोई कानून नहीं है।
उसको इंडियन पेनल कोड 1860 के तहत संप्रभु भारत के क्षेत्रीय जल यानी समुद्री तट से 12 नॉटिकल मील तक ही जो समुद्री डाकू या कोस्ट गार्ड के द्वारा पकड़े जाते हैं उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है। यह विधेयक लाया गया है कि इंडियाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सीमाओं से सटे या उसके परे सभी हिस्सों यानी हाई सी पर समुद्री डाकुओं द्वारा जो घटना हो जो पकड़े जाए उसको दंडित किया जा सके। महोदय, दिस लेजिस्लेशन is an outcome to the commitment made by the India by signing the United Nations Convention on the Law of the Sea in the year 1982. भारत ने इस कन्वेंशन को 1995 में रेक्टिफाई किया। इस विधेयक के पास होने से भारत के समुद्री व्यापार से जुड़े सभी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की जो बात कही गई है इसे पूरा करना आसान नहीं दिखता। वर्ष 2009 से 2014 तक की आईएमओ की रिपोर्ट के आधार पर 1173 पायरेसी और आर्म रॉबरी वेस्ट अफ्रीका और अपने तटवर्ती क्षेत्रों से रिपोर्ट किया गया है। इस अवधि में 500 भारतीयों को समुद्री डाकुओं द्वारा पकड़ा गया जिसका अभी तक कुछ पता नहीं है। महोदय, अगर हम विश्व स्तर पर बात करें तो 2010 से 2021 का आंकड़ा देखें तो वर्ष 2010 में 445 जहाजों पर समुद्री डाकुओं द्वारा अटैक हुआ। वहीं 2020 में 195 और 2021 में 132 समुद्री जहाजों पर हमला हुआ। महोदय, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम 2018 के रिपोर्ट के अनुसार 6 व्यापारिक समुद्री जहाज का हाईजैकिंग विश्व स्तर पर हुआ। 13 जहाजों पर अटैक के कारण आग लगी। 130 लोगों को बंदी बनाया गया और 78 अधिकारियों को जो जहाजों पर नौकरी करते थे उन्हें अगवा किया गया। इन समस्याओं को देखते हुए इस विधेयक में जो प्रावधान किए गए वह निश्चित ही समुद्री रास्ते से होने वाले व्यापार को सुरक्षा मिलेगी, लेकिन यह संदेह है कि यह बिल जान माल और इकोनॉमिक नुकसान को बचा सकेगी, क्योंकि इसका फाइनल करने के लिए केवल कुछ ही देशों यानी कि 4 ही देशों के लेजिस्लेशन को कंसल्ट किया गया है, जबकि समुद्र से सटे देशों से अधिक कंसल्टेशन होना चाहिए था। महोदय, पायरेसी का जो विषय है उसमें मंत्रालय का इन्वॉल्वमेंट, कई मंत्रालय का इन्वॉल्वमेंट है, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिफेंस, शिपिंग, लॉ एंड जस्टिस। इसलिए इस विषय में आवश्यक है कि सभी मंत्रालय या एजेंसी या डिपार्टमेंट्स का रोल क्लियर डिफाइन होना चाहिए, जो कि इस बिल में नहीं दिखता है, जो कि इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन के लिए आवश्यक है। महोदय, मेरा इस बिल में यह सुझाव है कि कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल काउंटर पायरेसी उपाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑफ द कोस्ट एंड सोमालिया के साथ हो तथा इसका प्रावधान भी इस बिल में शामिल किया जाए। साथ साथ ये भी मेरा कहना है कि नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क, इंटरलिंकिंग 51 IN एंड ICG स्टेशन, ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर्स, नेशनल AIS चेन और कोस्टल रडार को इस बिल के माध्यम से मजबूत किया जाए ताकि समुद्री व्यापार रास्ते को सेफ्टी और सिक्योरिटी मिले। इस बिल के अध्ययन से यह भी महसूस हो रहा है कि इंडियन ओरिजिन के जो सस्पेक्टेड और हाई सी में एक्ट ऑफ पायरेसी में इन्वॉल्व हैं उनका एक्स्ट्राडिशन के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन के प्रावधान में सुधार की आवश्यकता है। महोदय, ऐसा पाया गया है कि जो एक्यूज डेथ पेनाल्टी के लिए हैं उसको एक्स्ट्राडिशन करने में काफ़ी परेशानी होती है एवं शर्त के साथ एक्स्ट्राडिशन होता है कि डेथ पेनाल्टी नहीं दिया जाएगा। ऐसा कमिटमेंट सरकार के द्वारा किया जाता है। अतः मेरा इस बिल में ये कहना है और ये सुझाव है कि डेथ पेनाल्टी की जगह उम्र कैद या 12 साल या 16 साल की सजा हो और ये सब सुधार करते हुए इस बिल को पारित किया जाए। धन्यवाद सभापति महोदय। Thank you. Sri Danisari. धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2019 पर बोलने का मौका दिया। सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है। 2012 में ये बिल, सर डिपार्टमेंट का कोई मिनिस्टर नहीं है यहाँ पर मौजूद।
सर Minister, नहीं सारे सब नहीं, who is taking the note? All ministers were talking to each other, to their colleagues. No, he should speak and come. Please. चलिए खैर, यही सीरियसनेस है सरकार की। सभापति महोदय, Yes, I know. ओके, चलिए, Yes. ठीक है। यही सीरियसनेस है सरकार की। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। 2012 में इस बिल को इंट्रोड्यूस हुआ था, 14 से 19 का टाइम निकल गया। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है, इसकी सीरियसनेस को इस तरीके से खत्म ना किया जाए। मैं सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, मतलब ट्रेजरी बेंचेस का ये हाल है, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और जो है शोर मचा रहे हैं। मुझे तो अपनी बात करने दीजिए, I already told the minister. I have already agreed. Please address the chair, please. सभापति महोदय, मैं तो आप ही को एड्रेस कर रहा हूँ। प्लीज, अब ये जो है बार बार डिस्टर्ब करें, मैं तो ये कह रहा हूँ ये इतना अच्छा लेजिस्लेशन है, बहुत जरूरी लेजिस्लेशन है। मैं सरकार को कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं कि देर आए दुरुस्त आए, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी था। और मैं इस बात को मानता हूं कि पहले जमाने में धरती पर जंग हुआ करती थी, फिर हवा से हुई। अब असली खतरा पानी के अंदर है, और पानी के अंदर जो है आने वाला वक्त, अगर कोई युद्ध होगा तो वो पानी पे ही होगा। और पानी के अंदर अगर सिक्योरिटी के लिए हमारी सरकार जो है सीरियस नहीं होगी तो ये बहुत उसकी बात है। इसलिए मैं तो कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं कि सरकार इस बिल को लाई है, अच्छा बिल है। मैं सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, ये 1982 में यूएन में ये हमारा जो कमिटमेंट था और फिर रेटिफाई किया 1995 में, उसके तहत ये बिल लाया गया। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी अडॉप्टेड बाय इंडिया इन 1982 एंड रेटिफाइड इन 1995। लेकिन जो मेरे से पहले सभापति महोदय कुछ कुलीग्स ने यहाँ प्रश्न उठाए हैं, मैं उन पर भी आना चाहूंगा कि ये अभी तक जो हमारा सी के अंदर, समुद्र के अंदर इकोनॉमिक जोन होता था, उस पर हमारा अख्तियार था। लेकिन समुद्री डकैत जो होते हैं, जिनको हम पायरेट्स कहते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है कि सैकड़ों बेगुनाहों को, भारतीय बेगुनाहों को उन्होंने किडनैप किया, कई की हत्याएं भी हुई। लेकिन क्योंकि कानून ना होने की वजह से वो सब, उन पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकी। कानून लाया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कानून बिल जो है वो ऐसा होना चाहिए, कानून ऐसा लाया जाना चाहिए क्योंकि इसके इंटरनेशनल रिपरकशंस भी होंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से और इस सदन में कई सांसद जो हैं ने ये बात रखी कि डेथ पेनल्टी जो है वो बहुत, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा डेथ पेनल्टी शुड बी गिवन इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। लेकिन यहां हम अगर अटेम्प्ट टू मर्डर अटेम्प्ट को भी डेथ पेनल्टी उसका जो है क्राइम तय कर रहे हैं, तो वो वाकई चिंतनीय है। मैं ये चाहूंगा क्योंकि जो लॉ बने उसको, क्योंकि इसका इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी स्क्रूटनी होगी, तो हम ये चाहेंगे कि डेथ पेनल्टी ना रह करके जो लाइफ इंप्रिजनमेंट है, लाइफ इंप्रिजनमेंट मीन लाइफ इंप्रिजनमेंट होना चाहिए पूरी लाइफ के लिए। और इसमें ये क्लॉज भी हो जाए कि सरकार को कोई रिमिशन देने का अख्तियारात ना रहे,
जैसे इटली के 2 नागरिकों को जो पकड़े गए फिशरमैन्स की डेथ में, उनको छोड़ दिया गया, और यह जैसे गुजरात के अंदर अभी बिल्किस बानो के केस में सरकार ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 14 साल की सजा को रिमिशन किया, इस बिल के अंदर ऐसा क्लॉज डाला जाए कि जिनको गुनाह सजा दी जाए वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाए, डेथ पेनल्टी ना हो, लेकिन सरकार के पास रिमिशन का कोई अख्तियारात नहीं रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीमती सुप्रिया सुले। What is it? किस बानों का मामला है सर, वो सब जुडिस है, जो इन्होंने बात किया उसको एक्सपंज कर दीजिए सर, आपसे ये रिक्वेस्ट है। I will look into. Chair will look into. Supriya Sule. You made your submission. Chair will look into. Don't worry. Supriya Sule. Nothing will go on record except Supriya Sule. Please. Sir, thank you very much. I stand here in support of this very important bill that we are all discussing today. I appreciate all the points and the clarifications the Honorable Minister has given. So there's really very little left in the scope of the bill. I would, on the outset, like to thank the External Affairs Ministry, which is always very indulgent. Every time there is a crisis of anybody, either from my state or my constituency, every time I've reached out to them via a tweet, they've been most helpful. So I would like to put it on record and thank the Minister and the entire External Affairs Mantralaya for all the good work that they do. But there are a few suggestions. Dekho, अच्छे को अच्छा बोल रहे हैं. There are just few suggestions and clarifications I would like to ask the Honorable Minister. Most points are already covered, so I won't repeat them. But look at the Russia and the Ukraine war. During this war, there has been an incident where there is a boat which was full of food, which was attacked. Now, how do we deal? We all know, and many people before me have talked about it. Now, the next wars are not going to be physically attacking each other. These are going to be cyber attacks. So in this bill, there is nothing that has really come clearly about cyber attacks or how you're going to address cyber attacks in the future, because this bill is not only about today or yesterday, it's about something we want. Legislation also has to be very futuristic for 25 years, 30 years. Of course, we can change it and we evolve while the journey goes on. But in today's day and age, the only disappointment for me is there's no mention of any cyber attacks or how are we going to handle a situation like that? Because still that boat with food was attacked and nobody still knows who's taken it, how it's gone, where is it gone, and millions of people are hungry because of this gap or disruption that has come. The other point is talking about extraditions. Also, a lot of people did talk about extradition. Sir, extradition treaties are something, because if we arrest somebody or we want to arrest somebody and the person leaves the country, how are we going to bring them back in a time-bound manner? Because otherwise they'll be going. And I didn't want to make it political, but I would just like to give a small example. And please, I'd like to put it on record. I'm just drawing parallels for laws that we have made. And I'd like to give two examples. It's like the Nirav Modi case. Have we been able to extradite him and bring him back? The answer is not yet. So this is not a political point, but if we not been able to bring somebody back who has created such a big fraud, is what we hear from the government for so many years, how are you going to implement this law is my first question. That's the parallel I'm drawing. So, and the second parallel I'd like to draw, because my colleague and friend P.P. Chaudhary as well as Manish Tiwari both talked about it. You are drawing a parallel of this law when you talked about clause 11, where you talked about presumption, and you both took the example of PMLA. Now, I'm just broadening the scope. Again, this is not a political point. Again, I reiterate, I'm drawing a parallel. I'm not making an allegation. But in PMLA, again, it goes the same way, is what I understand from what P.P. Chaudhary, and these are all lawyers. I'm not a lawyer, so I don't understand law as well as these two lawyers understand it or interpret it. I am just a novice at all this. So my question to the Honorable Minister is that if PMLA, like you rightly, both of you drew parity in it, that the whole, you have to prove that you're innocent. Now, I'll give you a small example of Sanjay Raut, who happens to be a part of this thing. He was arrested. He was left after 103 days. And the order which came out said that, I'm just using it as a parallel, I'm not making an allegation. So all that he said was
the order says, I'm not saying, this is what the judge in the court says, that there was no case against him and how was he arrested? So my limited question to you is that you yourself, I mean, people from the treasury as well as the opposition has drawn the same parity that PMLA has ambiguity and it has presumption. So I think we should be careful while making laws. And I clearly remember I'm so glad Mr. Dubey is in the house right now, because he talked about this ambiguity when this bill of PMLA was discussed. And I still remember, and he said it can. Now I'm not getting into the merits whether this government is using it on the opposition or not. That's not what I'm here for. That's not what I want to debate here or discuss here. My limited point is that when we make laws, which are so important, and if we feel, and like a consensus of the House, that everybody's supporting this law, but if there is ambiguity and there is presumption, then should we make, I maybe mistake, maybe a wrong word, but should we follow, if we have doubts about what we did in PMLA, should we repeat those ambiguities and presumptions so that no law should get misused? That's my limited point. So I just want this clarification about the death penalty. Plenty has said about clause 3, the Chinese naval presence, but I know these are very sensitive issues, and I do respect that the Honorable External Minister may not be able to speak freely about these relationships. This is not also the agenda for it or the place for it. But I would like to request him on this occasion that there is always in society and in newspapers, if you read, there is always this sort of, the pot is boiling somewhere. So if the External Affairs Ministry would have a broader discussion on our relationships, because Meenakshi Lekhi was very kind enough by reading out all the accolades of this government and so many wonderful things that they have done and hosted so many people and been hosted by so many people. We're all very proud of it as Indians. But we would like to know, and why not have a broader discussion on China-India relationship? I think this bill is welcome, but we can't leave China and our relationship with all our neighbors when we discuss these kind of bills. So my only request to you is, if while I draw these two parallels, one, you missed my one point, so I'll just repeat it quickly, is about cyber attacks. Because in Russia and Ukraine, in that entire fight, there were food ships which were taken. Now, how do you bring accountability, or who do you really punish in such a situation, which is not covered here? So just two short points, either cyber attack clarification, and Mr. Chaudhary and Manish Tiwari drew the parallel of PMLA. So if you could kindly clarify. And I support this bill. Thank you very much. Sri Mohammed Bashir. Sir, I support this bill. I feel that this is in the best interest of the nation. With coming to the bill, sir, with regard to definitions, there are clarity in this. There is no ambiguity in this. And in that way also, it is drafted nicely. Sir, the Committee on External Affairs, which scrutinized this bill, has said, I quote, committee therefore desired to cover all means of transport on water and sea. The word vessel should be added along with the ship and aircraft. Moreover, along with the crew, the passengers and the presence of any other person on ship, bar aircraft, and private ship is also possible. The committee therefore would like that the word any person should also be incorporated suitably, and the ship and the aircraft should also be defined in two separate subclauses in the light of definition of the object and the relevant act to cover all kind of possibilities. I hope that government will seriously consider this observation of the Committee on External Affairs. Sir, this act stipulates volume of punishment, and India's need to have a separate legislation on this, and necessity of establishing the designated courts to address this issue. All these kind of things are most welcome. Sir, this widen the scope of lawmaking. The bill has been drafted in accordance with the United Nations Convention of Law and Sea adopted by India in 1982 and ratified in 1995. The committee now hope that the new proposed legislation will definitely enable the authorities to prosecute the apprehended pirates, irrespective of the nation. The number of UN resolutions have been
passed to facilitate the nation to enact legislation of the piracy by adopting definitions suggested. So that also may kindly be taken into consideration. Sir, the need of legislation, I need not say much about that. That is very, very vital because, sir, this kind of crimes in this sea are increasing day by day, whether it is in the way of robbery or any kind of ill motive, this kind of things are increasing. A dangerous situation has arisen in the country, not only in India, other countries also, sir. Our committee has suggested after 2008, the major part in piracy attack was witnessed in the Gulf of Aden by pirates of Somalia. Committee also observed that the threat of piracy has mushroomed in enormously. That also is a very important thing to be noted, sir. Towards, sir, and I would like to make 2-3 suggestions, sir. Further probe should be done in order to make the things in a proper way. What are the cost of piracy and how to do this compare to the expenses required for mitigation? 2, sir, what is the best way of countering armed maritime violence in region chronic lawlessness and anarchy? 3, sir, is a current international legal framework for countering piracy is sufficient or not? If not, whether what the government is going to do in that? What is the extent of government responsibility for countering piracy and what role should be a private sector can do in this? These are all certain things which I would like to say, sir. Anyhow, sir, it's a very good legislation and it is a very good intention. I support this wholeheartedly. Thank you very much, sir. के सुरेश जी 5 मिनट एन के प्रेमचंद जी 6 बजे प्रेमचंद्र Thank you. Thank you, Mr. Speaker, sir, for affording me this opportunity to speak on this anti-maritime piracy bill 2022. Sir, I fully support the bill. Honorable Minister, please. So first of all, I would like to congratulate the Honorable Minister in comprehensively piloting the bill in a very structured and diplomatic manner, for which I would like to place it on record our appreciation. It's really a model to all other ministers also, the way in which it was presented. And also, I would like to take this opportunity to thank to the Honorable External Affairs Minister for accepting my amendment. My amendment number 6 is accepted in your official amendment, for which also I am thankful to the Honorable Minister for accepting my amendment and moving it as an official amendment. Pardon? Yeah, other 5 amendments I will be moving, it will be accepted in future. Sir, it is quite unfortunate to note that India, as such a larger country, is having no separate, distinct domestic legislation in dealing with the piracy issues. The menace of piracy is increasing like anything, and we are adversely being affected because of the reason by which we are not having a domestic legislation so as to combat the piracy in the seas. Sir, our country, especially the Indian Navy and the Coastal Guard, is facing big difficulties in combating the maritime piracy only because of the reason by which we do not have a comprehensive legislation to combat this piracy in the maritime piracy. So my first suggestion is, sir, I would like to draw the attention of the Honorable Minister regarding the Italian Marines case, that is Enrich Lexica case, which was well agitated in the international courts of justice, and even the Supreme Court has also dealt in detail. I would like to draw the attention of the Honorable Minister, in which also still the judicial proceedings are going on. When 2 fishermen belonging to my constituency in Kollam, Nindagara, was brutally killed by the Italian Marines, big controversy has come regarding the jurisdiction where the case has to be agitated or the case has to be instituted. Such a big problem was there, big controversy was there, unfortunately, and the justice was given to the victims or the relative successors of the victims after a long time. So my suggestion to the Honorable Minister and the government is, we should have a comprehensive legislation so as to determine the jurisdiction
in the case of this international waters or waters according to the norms and guidelines of the International Convention. Because United Nations Convention on Laws on the Seas and clause is specific. So if the country, the domestic countries or the signatory countries or the signatory states are having ample freedom to have legislation of their own, but it should be within the stipulated norms of the convention, rules and regulations. If that be the case, my first suggestion is the government of India should have a comprehensive legislation in respect of the crimes in the seas. Sir, coming to the bill, I fully endorse the views, and it is a scrupulous scrutiny of the provisions of this bill by Manish Tiwari ji regarding clause 3, clause 4, clause 6 and other provisions of the bill. So regarding the clause 3, it is absolutely a correct fact, because the death penalty, it is being disapproved by the Honorable Supreme Court. It is in the rarest of the rare cases it is being given. Now, by way of the official amendment, you are providing a discretionary right to the Supreme Court or to the concerned court. Yes, it is absolutely okay, and we fully welcome the official amendments. But at the same time, we have to be more clear regarding the jurisdiction of the cases and the way by which the case is to be investigated. So regarding, clause 6, you are defining a police officer. That is, notwithstanding anything contained in the code, the central government, for the purpose of this act by notification, confer the powers of arrest, investigation and prosecution of any person exercisable by a police officer under the code. So I would like to move an amendment. The police officer means the police officer has to be designated. What is the rank of the police officer? That has to be designated in specific. Otherwise, it will also be creating problem in the future, because it will be agitated in the courts of law. And also regarding so clause 8, for the purpose of providing speedy trial of offences under this act, the central government has, after consulting the Chief Justice of the concerned High Court, my suggestion is, after getting concurrence from the Supreme Court, so concerned Chief Justice of the concerned High Court, that has to be made. That is an amendment which I have already given notice of an amendment. And it is a welcoming step on the path, because I am also part and parcel of the Standing Committee on External Affairs. We had threadbare discussion of this bill, and we had a very scrupulous scrutiny of the bill, and most of the suggestions of the Standing Committee has been accepted by the government, for which also we are thankful to the government. And this proclaimed offender in absentia, that has been removed. And also we have to be very careful about clause 11 of the bill. That is sir, burden of proof. It is a well accepted jurisprudence principles of Indian jurisprudence principle that you are, unless and until you are convicted, the presumption of law is an innocent. The burden of proof is on the convict. I don't know the legality of this clause in the courts. When this will be agitated in the courts of law, it will be a clear case of confusion, though that has to be clarified by the Honorable Minister. These are the provisions by which I would like to seek clarification on these issues. And another issue which I would like to highlight or draw the attention of the Honorable Minister regarding one of the major issue. Recently it has occurred. Now 30 Indians, I would like to draw the attention of the Honorable, this is also in the name of piracy. 30 Indian citizens have been arrested, and they have been captured by the request of the country, the Nigeria. They have requested for arresting 30 Indians who were in a vessel, out of which one third officer who belongs to my constituency, one Vikraman Nair. He is the third officer. He is also now in facing trial in Nigerian courts. I would like to urge upon the government and the minister, please look into the matter, and probable and maximum diplomatic assistance has to be provided them. And nowadays we are getting series of complaints from them. So yes, sir. They are not even allowed. They are not even allowed to have the mobile phone to their relatives in the country. So kindly have a diplomatic intervention in the matter, so as to rescue all these Indian prisoners or all these persons who are facing trial in Nigeria. With these words, once again, I support this bill. Thank you very much, sir. K. Suresh ji. Thank you, Speaker, sir. Give me opportunity to participate in the discussion of this important bill, the Anti-Maritime Piracy Bill 2019. So the bill brings the UN Convention on the Law of the Sea into domestic law and enable Indian authorities to take action against piracy on the high sea areas.
What essentially one gets to understand is that through the bill, the government of India becomes a party of the UN-led International Convention on the Law of Sea and get more truth to our difference of piracy, our literacy on the piracy. However, there are certain areas of concern regarding the ambiguity present in the bill. Before moving to those issues, let me remind you to current incident wherein 16 Indian seafarers of merchant vessels named Heroic Idun, who are now under the custody of Nigerian Navy and are taken to the land of interrogation, which is far from any judicial dignity. Just now, Honorable Member Shri N.K. Praveen also mentioned on Vijit Vikraman case. So this is very much embarrassment of their family as well as the members of parliament in Kerala. The parents of this Vijit Vikraman and others contacted us. We also contacted to External Affairs Ministry as well as our embassy of Nigeria. But we couldn't get a proper reply from the External Affairs Ministry and also our embassy. They are not giving proper reply or not given any intervention of the results. So I would like to again bring your attention, sir. Still, this problem is not solved. Their family members are very much shocked, and I would like to request to sort out this problem at the earliest. Sir, and also, sir, many of the vessels, the poor vessel workers, those who are working in the maritimes, they are unnecessarily arrested by the Nigeria, African, especially the Ghana, Nigeria, so many countries. So without any reason, they are deliberately arresting the vessels and taken into custody. This is the situation time to time in our Indian workers, those who are working the various vessels. So I would request the government to initiate further discussion to secure the release and help them reach safely India fast possible. And any discussion on maritime piracy, where India is a party to, must consider the pain and desolation of illegal detaining of Indian seafarers or the other nations, and securing them must be policy priorities. Speaker, sir, let me come to the other issues pertaining to the bill. Jurisdiction issue. The bill will be applied to the sea beyond exclusive economic zone, EEZ, that is beyond 200 nautical miles from India's coastline. However, it is unclear if it will apply to EEZ that extend between 12 and 200 nautical miles from the coast of India, which means that area of jurisdiction being unclear will result in loopholes for pirates and other criminals. The government must take it up the provide clarifications. The bill states that for the committing acts of piracy, the convict shall be punished with imprisonment for the life of death. It is unclear in the bill that how the overlap of the 14 years term and the life term will be determined, since committing an act of piracy will necessarily include participation as well. Sir, I'm के सुरेश जी तक बोलने तक बढ़ाई जाती है, पर 2 मिनट में खत्म होगा. Yes, yes, I'm concluding, sir. So, issue with the death penalty, Supreme Court of India has advocated for the use of extreme punishment in the rarest of rare, according to the top court. The death penalty violates Article 14 and 21 of the Constitution, frame the piracy in the ambit of domestic jurisdiction, and how to address the areas of overlap from the what makes rare case, and how the brutality piracy is defined needs clarity. This bill further states that the designated court will not be jurisdiction over offense committed on the foreign ship unless intervention is requested to the country of origin of the ship owner, or any other person on the ship. But the question remains as what the crime committed to a foreign ship is intended to harm India interest. So finally, these questions need to be answered by the rights of Indian fishermen who are illegally detained and brutally assaulted by the Lankan Navy is a case point as how would be the law treat the action by
foreign governments, naval force, whether as an act of crime or an act of their national maritime security policy and under the new law. Its application extend beyond 200 nautical miles, and how would the legality concerning the new law endorsed? With these words, sir, I once again support this bill. Thank you, sir. इस विधेयक को हम फिर डिबेट और आगे भी करेंगे और उस समय मंत्री जी का जवाब मिलेगा। सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 8 दिसंबर 2022 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Minister of Tribal to via the Honorable Chairman in this special mention under the 180A to approve the allocate funds for this project for the betterment of the ST people at Holy Hills, Namakkal district, Tamil Nadu under the Article 275/1 of Tribal Development Grants. Thank you, sir. श्री मुजीबुल्लाह खान, श्री A.A. Rahim. This opportunity. The HLL Life Care Limited is a Government of India owned public sector undertaking in Thiruvananthapuram, Kerala. It produces various healthcare products and its brand have large market share in the country and abroad as well. Hindustan Latex Limited has its head office in Thiruvananthapuram and factories in 7 locations across India. 4 of the factories were built in Kerala, such as Perurkada, Akulam, Kakkanad and Airapuram. The rest 3 factories are in Belgaum, Manesar and Indore. HLL currently has 220 pathology labs, 47 imaging centers and 6 labs under the brand name Hind Labs. It runs a total of 253 pharmacies across our country. HLL runs a subsidiary with the name of HLL Infratech Service Limited. In 2020-21, the company reported a turnover of rupees 5,081 crore. It is employing thousands of persons across states. The HLL also played a key role in providing assistance during the COVID pandemic. This was particularly possible as it is a public sector unit and is not operating merely to make a profit but to serve a public purpose. Hence, Hindustan Latex Limited must not be disinvested and privatized. HLL factory in Kerala is situated on land given by the state government
in view of advancing the private sector. Given that circumstances, Kerala has the right to retain HLL as state public sector unit that's free from the center's hold. The land and assets owned by HLL should therefore be returned to Kerala, or alternatively, the state should be allowed participation in this auction. Thank you, sir. Dr. Amar Patnaik. Thank you, Chairman, sir. So I rise to make this statement relating to demand for revising the sharing pattern of centrally sponsored schemes for Orissa. So inter and intra-state regional imbalances stem from an asymmetric growth exacerbated by historical socio-economic backwardness of vulnerable groups, calling for the focused attention of the government. The aspirational districts of program is a step in that direction, with Orissa having 10 out of those 112 districts. However, without any budgetary allocation and delinking 8 centrally sponsored schemes will have a steep increase in the state's share, an immense financial burden has been imposed on the Orissa's exchequer. Further, the unique geoclimatic conditions of Orissa make it vulnerable to multiple natural disasters. The total financial losses incurred by Orissa due to natural calamities from 1994 to 2019-20 amount to 85,313 crore. As per the Revenue and Disaster Management Ministry of Odisha, the state incurred a loss of over 1471 crores to cyclones in 2020-21 alone, impacting over 60 lakh lives. And this is exclusive of the losses of capital assets. Honorable Chief Minister Naveen Patnaik, representing 4.5 crore people of Orissa for the last 22 years, has been demanding natural calamity to be included as a criterion for special category status, or have the status of special focus states with benefits at par with northeastern and Himalayan states. Thus, sir, through you, I urge the central government to rework the sharing patterns of centrally sponsored schemes in line with the geoclimatic, economic, and sociological necessity of states like Orissa. A special allocation should accompany this on developing disaster-resilient power infrastructure with underground cabling connections and a coastal embankment for guarding against ocean water surges. Thank you, sir. Shri Sanjeev Arora. Dr. V. Shivdasan. Here, my special mention on Kannur railway station. Kannur railway station, situated at the heart of the city, is an important gateway to the historic land of Kannur. Kannur has one of the largest network of cooperatives in India, and the district has an educated and skilled population. Kannur is unique in having largest network of public libraries in India. The land has immense tourism potential, as the less explored areas of the district is attractive to those who pursue experience tourism. The railway station at Kannur becomes an important connecting point in ensuring outward and inward mobility, and hence there is a need to develop it to international standards. The government should pay a special attention to the railway station by improving the facilities which are kept minimal now. A railway station of international standards will be a great boost to the economical potential of the land of looms and loads. The development of Kannur railway station will also enhance the potential of the Kannur airport. A synergy of all these avenues of mobility will help in the all-round development of Kannur. The immediate action by the railways in this regard is essential for the land to achieve its true potential. Thank you for this opportunity. Thank you, sir. Thank you. Dr. Fozia Khan. Thank you, Chairman. Mike, thank you. A study conducted by Toxics Link, a Delhi-based NGO in November,
concluded that two of the most popular sanitary pads of the country contain 6 kinds of phthalates. Phthalates are most popularly employed as plasticizers in several products, referring to chemicals that ensure a product is soft, flexible, and has reduced friction on the surface. Their usage has dominated the production of plastic products for a long time now, sir. Their presence in sanitary pads can induce endometriosis, complications in pregnancy, underdevelopment of the fetus, hypertension, etc. The presence of VOCs used to add fragrance has further alarmed the situation, as they can potentially have harmful effects on human health. These chemicals are easily procured by the manufacturers due to a loophole in the Bureau of Indian Standards 1980 prescribed test. This test is to evaluate the absorbent filters and pad texture, but remains silent on the toxicity of ingredients so utilized, sir. The optional nature of the test, which determines the toxicity of the ingredients, is also witnessed in the US Food and Drugs regulations and in countries like France, Australia, and China. Hence, a structured approach accompanied by a study or a test of the sanitary pads available in the market should be our top priority. The consumers should be made aware of the presence of such chemicals by labeling these products. It is high time that the government commences to improve and strengthens the standards prescribed, suiting the modern day scientific advancements, which would ultimately protect the women and the mothers of our country, sir. Thank you. Shri Ajay Pratap Singh. Dr. John Bitas. So, Honorable Chairman, thank you very much. And please don't take objection to what I'm going to say now, because this is with regard to the role of governors and center-state relations. Dr. Ambedkar, during Constituent Assembly debates, referred to the governor's position as ornamental and said that he has no functions which he can discharge by himself. Article does not confer power to overrule the ministry on any particular matter. According to the principles of the new constitution, he is required to follow the advice of his ministry in all matters. I am quoting Dr. Ambedkar, unquote. Sir, 73 years later, the status quo is anything but what has been envisaged by the framers of the constitution. Sitting on a bill passed by the assembly, instead of ascending or returning it for reconsideration as soon as possible, as per Article 200, misquoting the limited discretionary power of governors under Article 163, etc., are common occurrences these days. Sarkare Commission, Punji Commission, National Commission to review the working of the Constitution, as well as the Supreme Court, have all stressed over the years the importance of governor as an autonomous and impartial agent who would serve as a bridge between the state and the center. Various commissions also recommended for introducing the procedure of consultation with the state chief minister in the selection of governors and time limit for taking decisions by governors on granting assent or reserving a bill for consideration of the president or returning a bill for reconsideration. But none of these recommendations have been accepted by the government in letter and spirit so far. I urge upon the government to take urgent steps to implement the recommendations of the said commissions vis-a-vis the governors for upholding the principles of the Constitution and ensuring harmonious relations between center and state, sir. Thank you very much, sir. I think everyone has had it. Honorable members, the House stands adjourned to meet at
1100 hours on Thursday, the 8th December 2022. आज हम आपको संसद भवन में मौजूद एक ऐसे डिपार्टमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है लोकसभा और राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में। इस डिपार्टमेंट को मिनी इंडिया भी कहते हैं और इस डिपार्टमेंट का काम होता है अलग अलग क्षेत्रों से आए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीच की दूरी को कम करना। ये डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, आइए जानते हैं। इंटरप्रिटेशन डिपार्टमेंट कहें या भाषांतरण विभाग, इसका काम होता है प्रोसीडिंग्स के दौरान सदन में बैठे हर मेंबर तक किसी भी भाषा को इंटरप्रेट करके पहुंचाना, फिर चाहे वो हिंदी, अंग्रेजी या कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आभार कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। Sir, I am completely new here and I thank you for giving me opportunity to speak here as a new member. भाषाओं से सजी हमारी संसद में देश के कोने कोने से सांसद चुनकर आते हैं और इस तरह मिनी इंडिया के बीच भाषाओं की दूरी को कैसे मिटाया जाए, यह देखने का काम इंटरप्रिटेशन डिपार्टमेंट या भाषांतरण विभाग का होता है। संसद के पहले सत्र की शुरुआत 13 मई 1952 को हुई। तब तक हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में ही भाषांतरण होता था।
पार्लियामेंट में इंटरप्रिटेशन की सबसे पहली शुरुआत 7 सितंबर 1964 को 22 भाषाओं के साथ की गई, क्योंकि तब तक ये जरूरत महसूस की गई कि यही वो कड़ी है जिसके जरिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भाषा को आसानी से समझ सकते हैं। ये डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स के बाद भी उतना ही एक्टिव होता है जितना कि और दिनों में। और पार्लियामेंट में मौजूद किस किस डिपार्टमेंट के लिए यह काम करता है, जैसे स्टैंडिंग कमेटीज, पार्लियामेंट्री कमेटीज, स्पीकर ऑफिस में, लोकसभा अध्यक्ष की बैठकों में, फॉरेन पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस की मीटिंग में और सेमिनार्स और एडवाइजरी कमेटीज की बैठकों में। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जब भी अपनी मनपसंद भाषा में सदन में बात रखनी होती है तो उनको कुछ नियम मानने पड़ते हैं। अपनी मनपसंद भाषा में बोलने के लिए एक सांसद को नोटिस देना पड़ता है। संसद में आधे घंटे पहले सांसद देते हैं नोटिस। प्रश्नकाल में चर्चा में भाग लेने के लिए सांसद को एक दिन पहले इंटरप्रिटेशन डिपार्टमेंट को बताना पड़ता है। अपनी मनपसंद भाषा में बोलने के लिए सांसद को लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति लेना अनिवार्य है। और अब बारी है खास बात की। खास बात यह है कि भाषांतरण और ट्रांसलेशन में बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए दोनों को एक समझने की भूल आप बिल्कुल नहीं करना। भाषांतरण के लिए हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होता है, जबकि ट्रांसलेशन के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपके जरूर काम आएगी। अपना पूरा ध्यान रखिए और हाँ, लोगों से अपनी दूरी भी बना करके रखिए, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। गुड बाय एंड कीप वॉचिंग संसद टीवी। Those in favor, please say aye. जो सदस्य विरोध में ना गए, I think the ayes have it. हवालों के पक्ष में हुआ, ayes have it. The bill is passed. मैं भारत का संविधान हूं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की आस्था का केंद्र हूं। मुझे याद है जब मेरे निर्माण के दौरान मेरे तमाम शिल्पकार एक बुनियादी बात को लेकर एक मत थे कि भविष्य का भारत तमाम तरह के भेदभाव से मुक्त हो। शायद इसीलिए मेरे प्रति सबका नजरिया और सबके लिए मेरा नजरिया समान रहा, और इसी समान भाव को मूर्त रूप दिया संविधान सभा की सदस्य हंसा मेहता ने। मेरे शिल्पकारों ने मेरे देश की एक अलग पहचान के लिए राष्ट्रीय ध्वज होने की जरूरत समझी और तिरंगे को अपनाया। 14 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत आजाद हुआ। सत्ता हस्तांतरण के इसी ऐतिहासिक अवसर पर संविधान सभा को आजाद भारत की महिलाओं की तरफ से हंसा मेहता ने देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तिरंगा झंडा दिया, और वही तिरंगा झंडा रात के 12 बजे फहराया गया। तिरंगा देते हुए हंसा मेहता ने कहा, We have fought, suffered and sacrificed in the cause of our country's freedom. We have today attained our goal. In presenting this symbol of our freedom, we once more offer our services to the nation. We pledge ourselves to work for a great India, for building up a nation that will be a nation among nations. हंसा मेहता मेरी उन विद्वान महिला सदस्यों में एक थीं जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रयास किए।
समान नागरिक संहिता को हमारे मौलिक अधिकारों का अंग होना चाहिए। इसी मांग को हंसा मेहता ने ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने रखा, जिस पर कई सदस्यों ने सहमति भी जताई। लेकिन कुछ सदस्यों की असहमति के कारण आज भी हंसा मेहता की ये मांग पूरी नहीं हो पाई है। सामाजिक बुराई को लेकर संविधान सभा में हुई चर्चा के दौरान हंसा मेहता ने अपनी राय रखी। शराबबंदी पर हुई चर्चा के दौरान हंसा मेहता ने कहा कि शराब बनाने और खुलेआम इसकी बिक्री पर पाबंदी लगाना फायदेमंद होगा। ऐसा होने से शराब पीने वाला प्रलोभन से दूर रहेगा। हंसा मेहता के कई प्रयासों में से एक सबसे महत्वपूर्ण प्रयास था बेटियों के लिए आर्थिक आजादी की मांग। आजादी के बाद संसद में हिंदू कोड बिल पर बहस के दौरान पुरजोर तरीके से पिता की संपत्ति में बेटी और बेटे के समान अधिकार की बात कही। सिर्फ यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने लिंग पक्षपात को लेकर अपनी संवेदनशील सोच का परिचय दिया और पूरी विश्व बिरादरी को एक बड़ी गलती सुधारने के लिए सहमत कर दिया। I cannot say that I feel as exhilarated as I did when we adopted the draft Universal Declaration of Human Rights. We have not found solution on some of the fundamental points. The measures of implementation are not adequate. 10 दिसंबर 1948 को यूएनएचआरसी के आर्टिकल 1 में बड़े बदलाव का श्रेय हंसा मेहता को ही जाता है। नतीजा ये कि आज हम बात ऑल मेन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल की नहीं, बल्कि ऑल ह्यूमन बीइंग आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल की करते हैं। देश की पहली महिला कुलपति, सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और पद्म भूषण हंसा मेहता ने न्याय और समानता के सिद्धांतों को विश्व व्यवस्था से लेकर भारतीय संविधान में स्थापित कराया। अगली बार बात एक ऐसे ही और संविधान निर्माता की। We are discussing the anti-defection law of 1985. Anti-defection law is one of the most important ways that we in this largest democracy in the world maintain and ensure that there is political discipline and most important that the trust of the electorate is maintained. Whether speaker should have all the powers or not, whether some other kinds of quasi-judicial authority or judicial authority should be there to decide the defection related matters, that we must ponder over and we must rectify. Watch with us 75 years laws that shaped India. किसी मुद्दे की ओर संबंधित मंत्री का ध्यान दिलाने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को प्रश्नकाल के तुरंत बाद लिया जा सकता है। प्रस्ताव पर एक दिन में 30 से 45 मिनट का समय दिया जाता है। प्रस्ताव लाने वाले सदस्य को अपने विषय को रखने के लिए 10 मिनट का समय मिलता है। प्रस्ताव के लिए बाकी सदस्यों को चर्चा के लिए 5-5 मिनट का समय मिलता है। प्रस्ताव का उद्देश्य महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ संबंधित मंत्री ध्यान दें और समय से मामले का समाधान निकालें। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान नहीं होता है। सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए लोकसभा अध्यक्ष अनुमति आवश्यक होती है। सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का प्रचलन 1954 से चला आ रहा है। धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक ज्ञान में रचा बसा काशी। अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के ताने बाने को समेटे हुए तमिलनाडु। भौगोलिक दूरी
भाषा भेद के बावजूद इन दोनों क्षेत्रों की कल्पना करने पर जो चित्र उभरता है वो भगवान शिव के बिना नहीं हो सकता। तमिल संस्कृति में जहां महादेव का विशिष्ट स्थान है, वहीं काशी और विश्वनाथ एक दूसरे की पूरक हैं। तमिलनाडु और काशी एक दूसरे की ही तरह अलौकिक और मलंग हैं। भारतीय सभ्यता का ये जीवट केंद्र एक लंबी ऐतिहासिक यात्रा समेटे हुए है। अतीत के पन्नों से नई पीढ़ी को रूबरू कराने के लिए काशी में आयोजित हो रहा है काशी तमिल संगमम। अतीत वो है जहां हम जीवन के लिए शिक्षा लेते हैं और भविष्य वो है जहां हम उस शिक्षा का प्रयोग करते हैं। काशी और तमिलनाडु ये भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के प्रमुख केंद्र हैं। दोनों के बीच सदियों से अटूट रिश्ता है। इस रिश्ते को पुनर्जीवित करने के लिए, इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं नवविक्रम सिंह। आज अपने विशेष कार्यक्रम में आपको बताएंगे काशी तमिल संगमम के बारे में। काशी और तमिलनाडु की विशेषताएं, विचारधाराएं, दर्शन और पौराणिक धरोहर इन क्षेत्रों को विशिष्ट बनाती है। ये जो आज यहाँ विरासत मौजूद है, दरअसल वो सैकड़ों वर्षों की यात्रा है। इस विरासत को सहेजने और जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार ने एक अहम शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चाहे वो नदियां, विचारधारा, विज्ञान या ज्ञान का संगम हो, भारत में संस्कृति और परंपराओं के हर संगम का उत्सव मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि वास्तव में ये भारत की शक्ति और विशेषताओं का उत्सव है और इस प्रकार ये काशी तमिल संगम को अद्वितीय बनाता है। हमारी सांस्कृतिक राजधानी काशी है, तो दूसरी ओर भारत की प्राचीनता और गौरव का केंद्र हमारा तमिलनाडु और तमिल संस्कृति है। ये संगम भी गंगा यमुना के संगम जितना ही पवित्र है। ये गंगा यमुना जितनी ही अनंत संभावनाओं और सामर्थ्य को समेटे हुए है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने पुस्तक तिरुक्कुरल का 13 भाषाओं में अनुवाद का भी विमोचन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी तमिल संगम आजादी के अमृत काल के दौरान हो रहा है। उन्होंने कहा कि अमृत काल में हमारे संकल्प समूचे देश की एकता से पूरे होंगे। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो हजारों वर्षों से सहज सांस्कृतिक एकता को जी रहा है। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि काशी तमिल संगमम हमें हमारे कर्तव्यों का बोध कराने और राष्ट्रीय एकता को मजबूती देने वाले संकल्प का एक मंच बनेगा। हमें आजादी के बाद हजारों वर्षों की इस परंपरा को, इस विरासत को मजबूत करना होगा। इस देश का एकता सूत्र बनाना, लेकिन दुर्भाग्य से इसके लिए बहुत प्रयास नहीं किए गए। काशी तमिल संगमम आज इस संकल्प के लिए एक प्लेटफॉर्म बनेगा कि हमें हमारे इस कर्तव्यों का बोध कराएगा और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए ऊर्जा देगा। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। काशी तमिल संगमम का मकसद देश के 2 सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षा केंद्रों तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुरानी संबंधों का उत्सव मनाना, फिर से इसे मजबूत करना और खोज करना है। तमिलनाडु से 2500 से ज्यादा प्रतिनिधि काशी की यात्रा कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आधुनिक प्रणालियों के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा भी युवा पीढ़ी तक पहुंच रही है।
शिक्षा मंत्रालय की ओर से किए जा रहे प्रयासों के सार्थक परिणाम काशी में दिख रहे हैं। अलग रहन सहन, अलग भाषा यहाँ कोई मायने नहीं रखती। भाव और अपनत्व ने तमाम दूरियों को खत्म कर दिया है। काशी तमिल संगमम देश की महान विरासत से जोड़ने और उससे समझने का मौका है। यहाँ कला संस्कृति के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। काशी तमिल संगमम उस भावना को मजबूत करता है जहाँ एक भारत और श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रगाढ़ करने का संकल्प है। मोटरसाइकिल पर सफर करते ये तमिलनाडु के होसूर के रहने वाले रमा और राजन हैं। ये दंपति देश को जानने और करीब से समझने की जिज्ञासा की वजह से पूरे भारत का सफर कर चुके हैं। रमा और राजन ने जब काशी तमिल संगमम के बारे में सुना तो पहुंच गए काशी इस अनूठे उत्सव में शामिल होने के लिए। हमें यहाँ आने को कैसा प्लान करे सो वाराणसी में तमिल संगम जाकर देखभाल को फिर नेपाल जाने को प्लान करे। This was the plan. There are so many borders we can enter Nepal, but we plan to see the Kashi Tamil Sangam, how it has been, because I am big fan of Modi ji, Yogi ji and all. I am impressed about their governance, how they are running this one. So I want to see in direct Kashi Tamil Sangam. So we have it is in our list to enter here, see here, visualize all these things and go to Nepal. This is the plan. यहाँ पहुंचकर काशी तमिल संगमम की विशेष उत्सव और मनपसंद खाने ने रमा और उनके पति की थकान को दूर कर दिया। रमा और राजन की यात्रा सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि समाज को संदेश देने के लिए भी है। All the night we ride 18,857 kilometers in 32 hours. We reached Varanasi. The another one reason why we ride in night means we want to let the fear down of the people who are living there. If you ride in night also, there is no fear to ride. Even a woman with a husband can ride. There is no fear. You can drive all the way. रमा और राजन के अलावा तमिलनाडु से हजारों लोग इस उत्सव का आनंद लेने के लिए आ रहे हैं। तमिलनाडु से 12 ग्रुप के 2500 से ज्यादा प्रतिनिधि काशी का दौरा कर रहे हैं। हर ग्रुप से संबंधित सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है जिससे कि ज्ञान का आदान प्रदान बेहतर तरीके से हो। साथ ही कोई भारत के उत्तर में बसा हो या दक्षिण में रह रहा हो, हमारी जड़ें कैसे एक ही हैं, इस पर वैज्ञानिक तरीके से मंथन भी हो रहा है। If we talk about the Kashi and Tamil, specifically the DNA ancestry, you see there are 4 colors. These 4 colors, the blue color comes from Indus Valley region, and you see that Indus Valley has given equal amount of ancestry to the either Kashi people or Tamil people, whereas you can see that the Andaman related ancestry is there, North Indian related ancestry is there, even European common related ancestry is there. So overall, if we talk about the commonality between cuisine, commonality between languages, commonality between culture, then there is one more thing
which connects Kasi and Tamil. That is our DNA. Thank you very much for your kind attention. तमिल कैलेंडर के अनुसार अभी चल रहे कार्तिकेय महीने में धार्मिक यात्रा का विशेष महत्व है। इसलिए तमिलनाडु से आया हर यात्री काशी विश्वनाथ के दर्शन कर खुद को धन्य मान रहा है। Actually, I visited Kasi for the first time during the year 2012. Now, when I'm visiting Kasi, I rethink or I am not able to categorize whether I visited the same place. So we all belong to the same country. We we respect each other, and I'm personally so happy to be part of this particular festival. Rather, it's not the trip, rather it's just a festival. It was all organized meticulously, so nicely that even smallest grievances also has not arisen. So thanks to Narendra Modi ji and Yogi Adityanath for such event, and we are proud to be participant here, and this will definitely in the future it will confluence of various people from Tamil Nadu to Kasi and Kasi to Tamil Nadu also. दरअसल मान्यता है कि दक्षिण में बसे हुए हर शिव भक्त को काशी की धार्मिक यात्रा करना बेहद जरूरी है। दक्षिण भारत से प्रचुर मात्रा में जो दक्षिण भारतीय जो दर्शनार्थी तमिल, दक्षिण कन्नड़, मलयालम, कई प्रकार के जो दक्षिण भारतीय जो भक्त हैं वो भगवान के परम भक्त होते हैं। उन लोगों की दृढ़ इच्छा रहती है कि 9 दिन 9 महीना 9 वर्ष काशी में निवास करेंगे। तो क्योंकि काशी काश्याम मरणान मोक्ष जीविते अन्नदातृत्व मृते मोक्ष ददामि हम, भगवान विश्वेश्वर तथा माता अन्नपूर्णा प्रतिज्ञाबद्ध है कि जब तक व्यक्ति जीवित रहेगा मैं अन्न प्रदान करती रहूंगी, मृत्यु को प्राप्त करेगा तो उसको मैं मोक्ष प्रदान करूंगा, भगवान विश्वेश्वर कहते हैं। तमिलनाडु में भले ही भाषा का अंतर हो, लेकिन वहां भक्तों में काशी को लेकर अगाध श्रद्धा प्राचीन काल से रही है। जो काशी नहीं आ सकते थे उस जमाने में, तो तेंकाशी, वृद्धकाशी, शिवकाशी ऐसे कई स्थान हैं तमिलनाडु में जहां चोल राज और अन्य राजाओं ने ऐसे काशी विश्वनाथ मंदिर बनाए। उसके बाद भी ऐसे है तमिलनाडु में सैकड़ों नगरों में काशी विश्वनाथ मंदिर है, और सभी मंदिरों में जो विष्णु मंदिर हो, शिव मंदिर हो, मुरुगन मंदिर हो, कार्तिकेय, सभी मंदिरों में काशी विश्वनाथ का एक छोटा सा मंदिर रहता है। गांव-गांव में व्यक्तियों का नाम रहता है काशीनाथ, विश्वनाथन। ये तमिलनाडु में जितना एक पॉपुलर नाम है वो पूरे देश में शायद अन्य प्रांतों में इतना नहीं मिलेगा, वहां इतना मिलता है। तो ऐसे देखिए तो कई प्रकार के, काशी में जब विश्वविद्यालय था तब कांची में विश्वविद्यालय था, और व्यापारिक संबंध था, कांची की बनारस साड़ी। काशी तमिल संगमम का मकसद ये है कि प्राचीन भारत में दोनों के संबंधों पर अनुसंधान हो और प्रगाढ़ता भी आए। तमिल संगमम यह कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना का परिणाम है। ये दोनों का बहुत बड़े हजारों सालों से संबंध है, आदिकाल से ही। जैसे तमिल ग्रामर जो लिखे अगस्त्य जी, वो काशी से शिव जी के प्रेरणा से वहां जाके तोलकाप्यम नाम का तमिल व्याकरण पुस्तक लिखा 5000 साल पहले। और पूरे दक्षिण भारत से जो काशी यात्रा करते हैं वो पहले रामेश्वरम जाके वहाँ कोटि तीर्थ स्नान करके वहाँ से वो तीर्थ लेकर काशी आते हैं। यहाँ विश्वनाथ जी का अभिषेक करते हैं उस तीर्थ से, और यहाँ से गंगा जल लेके रामेश्वर जाके वहाँ रामेश्वर जी का अभिषेक करते हैं। इससे ही, इस पद्धति से करने से तीर्थ यात्रा पूर्ण होती है। ये इस प्रकार की एक श्रद्धा तब से अभी तक।
काशी में तमिलनाडु से आए यात्रियों का स्वागत बाहें फैलाकर किया जा रहा है। तमिल यात्री वाराणसी के मंदिर घाट के अलावा सारनाथ का भी दौरा कर रहे हैं। भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा में सहूलियत हुई है। साथ ही मंदिर प्रशासन भी यात्रियों के स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। वहीं प्रयागराज संगम और अयोध्या दर्शन भी इस यात्रा में शामिल है। अभी तो जो अगर तमिल संगमम की हम बात करते हैं तो तमिल संगमम जो प्रतिभागी आ रहे हैं उनको हम लोग गेट पे रिसीव करके न्यास की तरफ से उनका उनका फूल माला से स्वागत करते हैं, बाकायदा डमरू वादन से उनको स्वागत करते हैं, फिर शास्त्री वाचन करा करके और बढ़िया दर्शन करा के फिर जो न्यास की परंपरा के अनुसार उनको अंग वस्त्र वगैरह भेंट करके पूरा धाम दिखाते और जो दोपहर में हमारे अन्य क्षेत्र चलता है उसमें भोजन कराते। ये हमारा एक पूरा ग्रुप, हर एक ग्रुप के साथ रूटीन बनाया गया। इसके अतिरिक्त अगर हम बाकी पर्यटक जो आ रहे हैं साउथ के उनकी बात करें तो उनके लिए हम लोगों ने दोनों चीज़ें बेहतर व्यवस्था की। एक तो हमारे धाम में चारों गेट जो मुख्य गर्भगृह के उससे दर्शन होते हैं, एक तो ये सहूलियत है, तो श्रद्धालुओं को कम समय लगता है दर्शन करने। साथ ही साथ हमने टेक्नोलॉजी को यूज करके ऑनलाइन सिस्टम की भी व्यवस्था कर रखी है। अगर कोई श्रद्धालु घर बैठे बैठे टिकट लेना चाहता है या सहूलियत लेना चाहता है तो घर बैठे बैठे वो उसको बुक कर सकता है, चाहे वो रुद्राभिषेक हो, चाहे वो सुगम दर्शन की व्यवस्था हो या अन्य कोई चीज़ प्रसाद की जैसी है। तो ये सब चीज़ें हमने ऑनलाइन सुविधा भी दे रखी, ऑफलाइन भी इन चीज़ों को सुविधा है, सहूलियत दे रखी। हमने पूरा अपना मंदिर के जो पूरे सेवा भाव में लगे हुए कर्मचारी हैं या और भी सेवादार हैं उनको कहा रखा कि इन चीज़ों को बेहतर ढंग से जो बाहर के श्रद्धालु आ रहे हैं और जो यहाँ के श्रद्धालु उनमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा और समयबद्ध डिलीवरी उनको दी जा सके ताकि उनका एक अनुभव अच्छा रहे और बार बार उन चीज़ों को बताएं और बार बार आने का उनका मन करे। तमिलनाडु के लोगों को यहाँ की हस्तशिल्प को भी करीब से जानने और समझने का मौका मिल रहा है। ये मंच दोनों क्षेत्रों में व्यापार को गति देने का जरिया भी बन रहा है। We are also very happy to see the newly renovated Kashi Vishwanath Mandir in full grandeur. I was there yesterday evening and it is really nice to see that the temple is now very clean and there is a direct access from the temple to Ganga. So we consider ourselves fortunate to be here. The Kanchipuram silk, which is very famous in Tamil Nadu, it is actually world famous, and the Banaras silk is also world famous. So there are many commonalities between the Tamil Nadu ecosystem, the Tamil Nadu culture, and the culture here, at Varanasi. So this will definitely, I think, open up many doors for entrepreneurs. Many entrepreneurs have come from Tamil Nadu to see what are the business opportunities here. Trade links can be established. Many folk artists have come. Many women entrepreneurs have come. So this will definitely create opportunities in the future for trade and commerce to increase between Kashi and Tamil Nadu. इस उत्सव में रंग भर रहा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ये एम्फी थिएटर, जहां पर सजे 75 स्टॉलों पर तमिलनाडु और काशी के व्यंजन, हस्तकला, साहित्य, वास्तुकला, सब कुछ एक ही परिसर में मौजूद है। काशी और तमिलनाडु हमारी सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उदाहरण है। दोनों में सदियों से संपर्क रहा है। आदि शंकराचार्य से लेकर सुब्रमण्यम भारती तक दोनों क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत रहे हैं। आइए आपको बताते हैं काशी में बसे मिनी तमिलनाडु के बारे में। सैकड़ों साल पुराना बना ये कुमार स्वामी मठ दक्षिण भारतीय शैली में बना कामकोटी मंदिर, तमिलनाडु के परिधान और रहन सहन। पहली नजर में ये सब देखने पर लगता है कि हम देश के दक्षिण में तीर्थाटन पर हैं, लेकिन ये बनारस है। पवित्रता, आध्यात्मिकता ने जोड़ा है भारत के दो सुदूर हिस्सों को।
यहाँ जो भगवान शंकराचार्य जैन सरस्वती जी कांची पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने काशी प्रवास के लिए जब आया तो उनको एक विचार आया मन कि जो माँ भगवती पार्वती हैं उनका जो टेम्पल है और उनका जो तपस्थली है वो कांची है, तो कांची को काशी से कैसे जोड़ा जाए, उनके मन में विचार आया। तो उन्होंने काशी में कांची कामकोटीश्वर नाम का टेम्पल स्थापित करने का उनके मन में विचार आया। तो उन्होंने उस महाशिवलिंग को इसी हरिश्चंद्र घाट में कांची कामकोटीश्वर नाम से प्रसिद्ध है और माँ भगवती कांची का कामाक्षी के रूप में यहाँ प्रसिद्धि है और दोनों का समागम हो काशी विश्वनाथ का और माँ पार्वती का, इसलिए उन्होंने काशी में कांची कामकोटीश्वर मंदिर की स्थापना की। इस मंदिर में चल रहे अतिरुद्र महायज्ञ में देश भर से 75 से ज्यादा खासतौर पर दक्षिण भारत के पुजारी एकत्रित हुए हैं, जिसका मकसद होता है कि विश्व में शांति और सद्भाव हो। लोगों को जो है काशी वास जो है बहुत आनंद मिल जाता है। गंगा भी जो है बहुत पहले से अभी साफ है, हम लोगों को मदद मिल रहा है, मर्यादा मिल रहा है और भगवान का कृपा भी मिल रहा है। इधर सभी जो है आसे तो हिमाचल पर्यंत जितने भी लोग हैं सब सुख शांति रहने के लिए, अखंड भूमंडल में युद्ध न होने के लिए, सब लोग मैत्रता मित्र भाव से रहने के लिए हम प्रार्थना पूर्वक जो है ये अतिरुद्र महायज्ञ चल रहा है। कोई देश के सुदूर हिस्से में बसा हो या दुनिया के किसी कोने में, अगर उसके अंदर धर्म के प्रति आस्था है तो वो काशीवास जरूर करना चाहता है। देश ही नहीं, दुनिया भर में बसे भारतीय काशी आकर पूजा अर्चना करते हैं। We came like 4 days ago to India. We went to other pilgrimage places like Gokarn and Lakshmi Kshetra in other places. But we decided to come here to stay 15 days to conduct 12 days program because Kashi is the utmost religious place. वाराणसी में हनुमान घाट, केदार घाट समेत कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां तमिलनाडु से जुड़े सैकड़ों परिवार कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। अब इनके अंदर तमिलनाडु दिल और काशी उसकी धड़कन बनकर धड़कता है। काशी को हमेशा लघु भारत कहा जाता है। जहाँ तक तमिल संस्कृति का सवाल है, काशी का और तमिल संस्कृति से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। काशी में हमारे यहाँ विवाह से लेकर अंतिम क्रिया तक जो है कहीं न कहीं काशी का संबंध है। आजादी के बाद एक बार फिर देश को पुरातन ज्ञान का महत्व समझाने में भी काशी में बसे लोगों का अहम योगदान है। पूज्य कांची कामकोटि पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती जी महाराज का एक संकल्प था कि ये वेद विद्या का प्रसार व्यापक रूप से पूरे देश में हो, तो उसी के अंगभूत काशी में और काशी के जो अगल बगल चित्रकूट है, प्रयाग है, अयोध्या है, हरिद्वार है, इन स्थानों पर भी कांची कामकोटि पीठम द्वारा वेद का जो श्रुति परंपरा है उसको अक्षुण्ण रखने के लिए कार्य प्रारंभ हुए। काशी तमिल संगमम इस संबंध को और प्रगाढ़ बना रहा है, क्योंकि मान्यता है कि काशी में हुए आयोजन का प्रभाव सनातन संस्कृति को मानने वाले हर व्यक्ति पर पड़ता है। हमारी जो संस्कृति हमेशा एक रही है, खाली भाव अलग अलग था। इन दोनों को निकट से समझने का एक अवसर इस संगमम के माध्यम से लोगों को प्राप्त हो रहा है। काशी से हम इतिहास को देखें, काशी से निकला हुआ जो भी संदेश है वो जो है कि पूरे समाज को उद्वेलित करता है और एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता लाता है। इस कार्यक्रम में साफ नजर आ रहा है कि भारत में साझा सांस्कृतिक एकता इतनी मजबूत है कि कोई भी इस देश को महज भाषा और परिवेश के आधार पर नहीं बांट सकता। This effort means Tamil is the property of the entire country. The Tamil heritage, Tamil value system, Tamil architecture, Tamil temples, and Tamil's way of doing things is an all India asset
For example, idli was confined to Tamil Nadu, dosa was confined to Tamil Nadu, vada was confined to Tamil Nadu. It's a national asset. It's a national brand at the global level today. That is because we are one. I think that this event reflects. काशी तमिल संगमम में आयोजित शैक्षणिक सत्र में वक्ताओं ने काशी और तमिलनाडु के बीच ऐतिहासिक संबंधों पर चर्चा भी की। अगर हमें भारत दर्शन का मर्म समझना है तो दक्षिण के विचारों और शैली को भी जानना होगा। साथ ही काशी और शेष भारत से उसका संबंध समझना होगा। शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश सरकार और कई विभागों ने 1 महीने के इस व्यापक कार्यक्रम को साकार किया है। इसमें बीएचयू और आईआईटी मद्रास जैसे महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थान भी सहयोग कर रहे हैं। काशी तमिल संगमम शब्दों से ज्यादा एक एहसास और अनुभव है। ऐसे कार्यक्रम युवाओं को देश की पारंपरिक धरोहर पर अनुसंधान के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। काशी तमिल संगमम से जो यात्रा प्रारंभ हुई है वो देश की एकता के सूत्र को और मजबूत करेगी। हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे, मेरे साथी कैमरा पर्सन डीके पांडे और साथी ललन यादव को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी। मसले जो जुड़े हैं आपसे, कराएंगे रूबरू हर पहलू से, करेंगे गहराई से पड़ताल, लेंगे विशेषज्ञों की राय, क्योंकि ये है मुद्दा आपका, सिर्फ संसद टीवी पर। We are discussing the anti-defection law of 1985. Anti-defection law is one of the most important ways that we in this largest democracy in the world maintain and ensure that there is political discipline and, most important, that the trust of the electorate is maintained. Whether speakers should have all the powers or not, whether some other kinds of quasi-judicial authority or judicial authority should be there to decide the defection-related matters, that we must ponder over and we must rectify. Watch with us 75 years, laws that shaped India. India became free 75 years ago. We all know that we have fundamental rights. But you know we also have fundamental duties. Duty towards our nation. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे राज्यसभा के नए सभापति की। बुधवार से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। सत्र के पहले दिन राज्यसभा के नए सभापति जगदीप धनखड़ जी ने राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन किया। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विभिन्न दलों के सदस्यों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के नए सभापति के रूप में बनने पर उनका अभिनंदन किया।
दरअसल उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा देश की महान लोकतांत्रिक विरासत का महत्वपूर्ण संवाहक है। तमाम इसके राजनीतिक पहलू भी होते हैं, उन पे भी हम चर्चा करेंगे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल राज्यसभा के आज जो सत्र की शुरुआत हुई, नए सभापति ने उच्च सदन का संचालन शुरू किया। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आज की एक खास तस्वीर आपको दिखाते हैं। माननीय सभापति जी, अब एक नजर डालते हैं जब नए सभापति के रूप में जगदीप धनखड़ जी ने कार्रवाई का संचालन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपसभापति हरिवंश जी, नेता सदन पीयूष गोयल, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सहित विभिन्न दलों की ओर से नए सभापति जगदीप धनखड़ जी का अभिनंदन किया गया। Honorable members, availing this historic opportunity to share some concerns with the distinguished members of this august house. Terms upper house and house of elders, though not part of the official glossary, amply reflect uniquely significant importance of this institution. Nation justifiably expects the house of elders to take decisive directional lead in reaffirming and enhancing the core values of the Republic and set up the traditions of parliamentary democracy, exemplifying the highest deliberative, emulative standards. आदरणीय सभापति जी, आप तो झुंझुनू से आते हैं। झुंझुनू वीरों की भूमि है। शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा कि जिसने देश की सेवा में अग्रिम भूमिका न निभाई हो। और ये भी सोने में सुहागा है कि आप स्वयं भी सैनिक स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं। तो किसान के पुत्र और सैनिक स्कूल के विद्यार्थी के रूप में मैं देखता हूं कि आप में किसान और जवान दोनों समाहित हैं। लीगल और संसदीय क्षेत्रों का लंबा और समृद्ध अनुभव लेकर आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। पुनः आपका अभिनंदन और बहुत बधाई। ऐसा मानता हूं कि आपके रिच एक्सपीरियंस के साथ लंबा सार्वजनिक जीवन आपको इस सदन के संचालन एवं माननीय सदस्यों के संरक्षक जैसी चैलेंजिंग भूमिका का बहुत बेहतर ढंग से निर्वाह में मदद करेगा। आज जो अच्छी बातें रखी गई हैं, जिस प्रकार से उत्साह के साथ सबने आपका स्वागत किया है, आगे आने वाले दिनों में हम यही भावना हमारे कार्यकाल में भी रखें, काम में भी रखेंगे। और क्लियरली आपके साथ लगभग सभी सदस्यों का मिलना जुलना हो चुका है। एक ना एक मौके पे हम सब आपको मिल चुके हैं। तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इट्स अ जॉय टू बी विद यू, टू मीट यू, टू एक्सचेंज नोट्स विद यू, टू टॉक टू यू। अब पता नहीं वो राजस्थान से आप लेके आए हैं या सिटी ऑफ जॉय से, जहां से आप बहुत ही सफल अपना गवर्नर का कार्यकाल कर दिल्ली आए। पर वास्तविकता यह है कि आपकी अध्यक्षता में इस सदन में मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारे जॉयफुल ओकेजन्स हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। अपर हाउस के संरक्षक के रूप में आपकी भूमिका बाकी भूमिकाओं से बहुत बड़ी है। आप जिस आसन पर बैठे हैं वहां देश के कई महान हस्तियां बैठ चुकी है। हमारे 6 सभापति बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। आप भूमि पुत्र हो, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि किसान के पुत्र, तो मैं तो भूमि पुत्र कहूंगा। दरअसल सभापति जगदीप धनखड़ जी का एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, संवैधानिक पदों पर रहे हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। इस नाते उनका एक लंबा
संसदीय अनुभव भी रहा है। जाहिर तौर पर इसका कहीं ना कहीं लाभ सदन को भी मिलेगा, सदन के कार्रवाई के संचालन में भी दिखाई देगा। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात राज्यसभा के नए सभापति जगदीप धनखड़ जी की करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के राजनीतिक संपादक अखिलेश कुमार सिंह जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़ जी हमारे साथ मौजूद है। रोशन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन अखिलेश जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे करूंगा कि आज जो दृश्य देखने को मिला जगदीप धनखड़ जी के सभापति का, जब उन्होंने कार्य संभाला, तो जिस तरह से सदस्यों ने, विभिन्न दलों के नेताओं ने उनका अभिनंदन किया, आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज उनका पहला दिन था, तो जाहिर सी बात है कि सब लोगों ने उनको अपनी बेस्ट विशेस दी हैं और कामना की है कि उनका ये टेन्योर कार्यकाल अच्छा होगा। और सभी ने आश्वासन दिया कि सुचारू रूप से चलाने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धनखड़ जी की जो व्यक्तिगत पृष्ठभूमि है कि एक किसान परिवार से भी आते हैं और खुद सैनिक स्कूल से पढ़े हैं, झुंझुनू जिले राजस्थान के रहने वाले, जहाँ की एक परंपरा रही है कि लगभग हर परिवार से कोई ना कोई सेना में जाता है जी। तो एक इस तरह की पृष्ठभूमि है, एक रूरल बैकग्राउंड से आते हैं और एक बहुत अच्छे एस्टैब्लिश्ड लॉयर थे। बाद में इसके साथ साथ उन्होंने उनकी पॉलिटिकल इनिंग्स भी काफ़ी लंबी रही। लगभग हर भूमिका में पॉलिटिकल इनिंग्स में उन्होंने एक महती भूमिका निभाई है। तो एक्सपीरियंस बहुत लंबा है और ये अपेक्षा की जानी चाहिए कि उनका ये कार्यकाल ठीक होगा, सबको साथ लेकर चलेंगे और सारी पार्टीज उनको कोऑपरेट करेंगी। लेकिन आज आश्वासन देना और एक सद्भावपूर्ण माहौल में सबको साथ लेकर चलने की बात करना, जो हम लोगों ने हाल फिलहाल में देखा है कि लोकसभा के कंपैरिजन में राज्यसभा में काफी चुनौतियां रही हैं। जो भी पीठासीन अधिकारी रहे हैं उनको काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। सबसे बड़ी चीज है कि जो समीकरण होते हैं दोनों हाउसेज में वो अलग होता है। राज्यसभा में लगभग बराबरी होती है, लगभग रीजनल पार्टीज का काफी समय एक हर जगह से उनका एक बोलबाला है, तो उनके नंबर्स भी काफी होते हैं। तो ऐसे में कोई बिल हो, कोई ऐसा एक कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं जिस पर लंबी चौड़ी डिबेट चलती है और कई बार हम लोगों ने पिछले समय देखा भी कि काफी माहौल खराब हुआ जी। तो ऐसे में इनके अनुभव से अपेक्षा करनी चाहिए कि अपने अनुभव का यूज करके सबको साथ में ले करके और हेल्दी डिबेट्स करेंगे और लेजिस्लेशन प्रॉपर तरीके से होगा। जी बिल्कुल अखिलेश जी, और ऐसा रोशन जी माना भी जाता है कि जब कोई मिट्टी से जुड़ा व्यक्ति ऐसे उच्च मंच पर पहुंचता है, उसका संचालन करता है, तो ये माना जाता है कि जो हमारी लोकतांत्रिक विमर्श है उसको और अधिक ताकत मिलती है, क्योंकि जमीन से जुड़े हर करीब से चीजों को देखा होता है, घटनाओं को देखा होता है, आम आदमी के दुख दर्द को उन्होंने करीब से देखा है। आप कैसे समझते हैं हमारी लोकतांत्रिक जो विमर्श है उसको कितनी तेजी मिलेगी, कितना अधिक और मजबूत होगा? देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि पिछले हम अगर 5, 7 या 10 सालों का अगर हम जिक्र करें तो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी रहे हैं जो वंचित समाज से आते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति बनी हैं वो आदिवासी समाज से आती हैं, और जो अभी धनखड़ जी बने हैं वो किसान परिवार से आते हैं, और प्रधानमंत्री जी जो हैं वो भी पिछड़े समाज से आते हैं। तो कुल मिला के जो हमारे देश का इसमें संचालन कर रहे हैं वो समाज के ऐसे वर्ग से आते हैं जो कभी न कभी वंचित रहे हैं अपने अधिकारों से, या उनकी जो भी उनकी भूमिका रही है समाज में, और आज उस देश का संचालन कर रहे हैं। इसका मतलब कि हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा है। हमको इसको इस तरह से ले सकते हैं कि ये देश अब आगे बढ़ रहा है। और जो लोकतंत्र की आपने बात की कि जब समाज के ऐसे लोग ऊपर आते हैं तो उनको एक एक कदम की जानकारी होती है, वो उस पीड़ा को झेलते हुए आते हैं और उस पीड़ा से दूसरे लोग सफर न करें, इसकी कोशिश करते हैं कि समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या उसमें हम अच्छा कर सकते हैं, क्या उसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं कि हमारी जो समाज के बाकी लोग हैं उसको उसका फायदा हो सके। तो ये अनुभव है, उनके जीवन का अनुभव है, उनके ने जो उन्होंने कष्ट सहे हैं, जो उन्होंने परिश्रम किया है, उसका प्रतिफल हमें मिलता है। और यही इसलिए हमारा जो लोकतंत्र है वो मजबूत हो रहा है, और हमारी लोकतंत्र की मजबूती का परिणाम यही है कि हमारे जो शीर्ष पदों पर लोग हैं वो ऐसे समाज से आते हैं जो कभी न कभी वंचित रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो जगदीप धनखड़ जी का अनुभव है और उसका जो असर है आज पहले दिन देखने को भी मिला। जगदीप धनखड़ जी ने जो संवैधानिक व्यवस्था हमारी है, सदन में जो चर्चाएं होती हैं उसको लेकर जो कुछ सदस्यों से कहा और जो अपील की,
वो भी खासा असर डालेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। More than any other theater of legislature, this theater has to take the lead. This theater has to set standards that are to be emulated by any other center in the country. I would therefore urge you to confine to dignity, decorum, and be in a focused manner. I have carefully gone through every word is spoken by the Honorable Minister, and you will find spinal strength of the foreign policy which he has articulated in a focused manner. तो आपने देखा कि किस तरह से जगदीप धनखड़ जी ने आज पहले ही दिन सदस्यों से एक फोकस वे में जिस तरह सदन की कार्रवाई में भाग लेने की अपील की, वो दिखाता है कि जो उनका अनुभव रहा है संवैधानिक और प्रशासनिक, उसका असर साफ देखने को मिला। आप कैसे देखते हैं अखिलेश जी, सीधे सीधे शब्दों में सदन के सदस्यों से एक अपील करना? देखिए, कोई भी हाउस है, जब उसका संचालन होता है तो उसके पास बहुत सारे बिजनेस होते हैं। देश को बहुत अपेक्षाएं होती हैं कि हमारे चुने हुए सांसद वहाँ पर आके प्रोडक्टिव तरीके से संचालन करेंगे और हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो नियम कानून है, उसका प्रॉपर तरीके से उसका लेजिस्लेशन होगा, कार्रवाई होगी और उसके प्रोडक्टिव रिजल्ट्स आएंगे। जो हाल फिलहाल के अनुभव रहे हैं, काफ़ी ऐसे माहौल हुए और एक चिंताजनक स्थिति बनी पिछले सदन सत्र में हम लोगों ने देखा। तो निश्चित तौर पे एक पीठासीन अधिकारी के रूप में उनका ये अपील करना बहुत ही जायज़ है और बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि सबको साथ में लेकर के चलना सबके हित में है। आज भी आपने देखा कि शुरुआत में ही प्राइम मिनिस्टर ने भी यही अपील की कि जो यंग और न्यू पार्लियामेंटेरियंस हैं जो आते हैं चुन करके, वो शिकायत करते हैं कि उन्हें मौका नहीं मिलता है सीखने का, बोलने का, और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से चली जाती है। तो ये सबके हित में है। काफ़ी एक्सपेंसेस भी आते हैं और चुने हुए प्रतिनिधि अपने काम धाम, अपने क्षेत्र को छोड़ करके यहाँ पर आते हैं कि प्रोडक्टिव डिबेट होगी, और इस तरह के अगर डिसरप्शंस होते हैं तो काफ़ी नुकसान होता है, सदन का नुकसान होता है। और इस तरह की अपील से ये अपेक्षा की जानी चाहिए कि इसकी सेंसिटिविटी को समझ करके और अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन लोग करेंगे। और जो इस बार विंटर सेशन है, काफ़ी एक ऐसे समय में हो रहा है, जैसा कि तमाम मंत्री ने, प्राइम मिनिस्टर ने, इवन धनखड़ जी ने कहा कि ये अमृत काल है, 75 ईयर्स के बाद ये पहला सेशन हो रहा है। तो इसका भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। G20 की हमारी कैप्टेंसी, हमको लीडरशिप मिली है, उससे भी और जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। पूरा एक ग्लोबल अटेंशन है इंडिया की तरफ। तो ऐसे में जो हमारे चुने प्रतिनिधि हैं, उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं कि हम जो हमारी पार्लियामेंट है, जो लोकसभा के दोनों अंग हैं, उनसे ऐसा संदेश जाए कि हम एक हेल्दी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को ही फॉलो करते हैं। जाहिर सी बात है कि जगदीप धनखड़ जी स्वयं राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे, नीचे से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। दिल्ली में वो केंद्रीय मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे, पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी रहे, और एक अधिवक्ता के रूप में भी उन्होंने एक अच्छे पहचान अपनी देश में बनाई, कानूनविद के रूप में एक अच्छी पहचान उन्होंने बनाई। रोशन जी, जब बात जगदीप धनखड़ जी इस बात को कहते हैं, सदन की डिग्निटी, सदन की मर्यादा और फॉरेन पॉलिसी की बात, इसके क्या मायने हैं? देखिए, मैं उनकी जो उन्होंने आज पहला अपना अभिभाषण दिया, तो उसमें 4 बातें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही। एक जो महत्वपूर्ण है कि जो राज्यसभा है, वो देश के जितने भी सदन हैं, विधानसभा हैं, चाहे लोकसभा हैं या उससे छोटे जो सदन हैं, उन सब में सबसे महत्वपूर्ण राज्यसभा सदन है। और इस सदन की जो इसको लीड करना है, इसको बाकी सदनों का नेतृत्व करना है, हाउस ऑफ एल्डर्स है। दूसरी बात उन्होंने कही कि डिग्निटी, शिष्टाचार और मर्यादा, 2 बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि सदन के अंदर जिस तरह से कुछ सांसदों ने ऐसा व्यवहार किया, कुर्सियों पर चढ़ गए थे, किताबें फेंकी, कागज फाड़े, सभापति के सिर के ऊपर तक उन्होंने कागज फेंके थे। तो मर्यादा रखना, शिष्टाचार, ये इस पर उन्होंने फोकस किया। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है जो उन्होंने कही कि जो न्यायिक आयोग बना था, संसद ने संविधान संशोधन किया था जी,
99वां संशोधन हुआ था